यानी तकरीबन पिछले 3-1 साल से ये सिर्फ ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। तो आई होप आप में से जितने लोग ब्लॉकचेन पे हैं, क्योंकि कुछ मुझे जाने माने चेहरे भी इधर इसमें नजर आ रहे हैं, कुछ पीआईसी के लोग भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये एक बड़ा जबरदस्त वेबिनार होने वाला है, ठीक है। तो मैं भी अपने आप को म्यूट करता हूँ। उमर भाई, अप टू यू। All right. Assalamu alaikum. I'm seeing there's somebody named Bart's iPhone who has joined. कुछ लोग थे जो कि मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि वेबिनार जो है वो उर्दू में होगा। सो आई एम नॉट श्योर किसी ऐसे बंदे ने ज्वाइन किया जो उर्दू नहीं बोलता, बिकॉज आई हैड सम इन्विटेशंस। तो मैंने लोगों को, या आई बिलीव if there are any people in the webinar which don't speak Urdu, then it could be a problem for you guys, because we will be mostly speaking in Urdu. So in that case, what you can do is you can drop your email in the chat or send an email to me, and I can reply you back with the slides or some of the recommended content in English that would help you out. I guess that's all I can do. So with that note, let's start. जैसे कि अहमद भाई ने बताया, मैं एक ब्लॉकचेन कंसल्टेंट हूँ। इधर फिनलैंड में एक नॉर्डिक कंपनी है Tieto Every, उसके लिए मैं काम करता हूँ। और पिछले 7-7.5 से मेरा IT solutions आर्किटेक्ट और बिल्ड करने का एक्सपीरियंस है, मोस्टली फेयरली ऑन द टेक्निकल साइड। And besides that, from last 3 years, I've been working with blockchains, and specifically in the digital identity and self-sovereign identity domain. And recently, I started TrustNet Pakistan. And the core reason behind that whole thing was that I wanted to bring the concept of self-sovereign identity and improvement in digital identity within Pakistan. So jahan tak TrustNet Pakistan ki baat hai, we'll come to that later by the end of this session. So without any further ado, let's start. One important thing before we jump in, that is ke ye jo webinar hai, it will be wholly surrounded around self-sovereign identity and its enablers, such as digital identifiers, verifiable credentials, and trust over IP and whatnot. So let's start then. Wait a second. All right. So what we will be covering today is following topics: digital identity or uske challenges, self-sovereign identity, I believe. The recording will be provided to you later, so don't worry about that. I just got a private message, so that asks for the recording, so that will be delivered to you later on. It will also be available on the Hyperledger's public YouTube channel. So, but you will be communicated about that. All right. So, coming back to the agenda, digital identity और उसके challenges, उसके अलावा self-sovereign identity है क्या और उसकी ज़रूरत क्यों है, उसके enablers like decentralized identifiers, verifiable credentials, or be different enablers. फिर underlying technology like Hyperledger frameworks like Indy, Ursa, and Aries, जो उसको enable करते हैं, जिनको use करके हम ये सारी चीजें actual में implement कर सकते हैं. And then in the end, what it actually means for your organization. Like how can you actually incorporate this into your business, or it doesn't matter if it's public or private. And by the end, a demo that actually shows the whole thing in action. Okay, exactly a use case basically. All right. One more thing, the whole today's content that I will be showing is loosely based on a Linux Foundation course, LFS 172X. It's mentioned. So I will also share these slides with you guys. तो आप लोग इसमें जितने भी URLs और जो भी content है, you can see it later and maybe look into the course later on. It's pretty interesting. All right. So
digital identity and before digital identity, the identity itself. हम लोग इन चीजों पे कभी गौर नहीं करते because these are just, we are surrounded by them or they're always there, so we never think about them a lot. But if you pay some attention on it, तो आप realize करते हैं कि identity जो है, it's just some certain facts about you, about a person, about a thing, or what it can be proved. And taking this to the web makes it digital, pretty decent, right? And then this digital identity that we're talking about, it could be actually a person, organization, an application, a device, it could be anything. And it consists of certain attributes, and these attributes define what is involved in that identity, all right? Now, what's the big deal about it? The thing is, कोई नहीं जानता कि कीबोर्ड के उस साइड पर कौन है. That's why the trust on internet is hard. Nobody knows that you're a dog on the internet. It's a really famous article from New Yorker. I think published in 1993. It got really viral back then. And it was like that, how can you actually trust somebody over the internet? And technically you cannot. Eventually, think of it like this, कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप इंटरनेट पे कभी भी नहीं करेंगे. जैसे आप कभी इंटरनेट पे घर नहीं खरीद सकते, आप किसी को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दे सकते इस बेस पे कि उसने आपको अपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर दिए हैं. They could be forged, right? And then आप किसी नाइजीरियन प्रिंस को 30% कट पे कमीशन नहीं देंगे जो स्पैम ईमेल्स में आता है. All right. And then, which actually brings us to a very important point, that is the problem with the internet. Internet पे जो trust है, that's broken. It has always been like that because the internet, जब ये design किया जा रहा था, it was designed for machines, not people, and which actually put down the foundation that there is a missing layer on the internet, that is the trust layer. Internet पर machines के लिए trust layer available है, पर people के लिए trust layer available नहीं है. And now, which actually gave birth to the broken identity over the internet. So, जितनी भी digital identity services हैं internet पर, more or less, they function with that model of that broken trust layer. So that's why those are loosely designed and badly designed identity systems. We'll talk about them soon. Let's move forward with that. All right. So, like I said, internet jab create kiya gaya tha, firstly, I believe ARPANET was the initial guys who did that in US, and then they started connecting systems. So initially there were small number of systems who were trying to talk to each other, all right, universities probably. And then those systems, they knew each other and वो एक दूसरे पर trust करते थे. That's why there was actually no need of having an identity-based system in that time जब internet बहुत छोटा था. And then जब आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो system grow हुआ और internet जो है वो expand होना शुरू हुआ, तो जो system की security है उसके लिए उन्होंने different identity mechanisms बनाने शुरू किए. लेकिन eventually we came to a point where those identity solutions were not enough because it was always based on systems, not people. And unfortunately, we're still stuck with that problem, and we'll see how. And that is the universally hated IDs and password systems. अगर आप खुद गौर करें तो आपके पास इस वक्त मिनिमम 8 से 10 अकाउंट्स होंगे इंटरनेट पे जिनके डिफरेंट पासवर्ड्स हैं, और उनको मैनेज करना, उनको याद रखना, फिर भूल जाओ तो रिकवर करना, दैट्स अनदर चैलेंज ऑफ इट्स ओन. एंड इवेंचुअली अगर आप क्या कहते हैं उन पासवर्ड्स को मैनेज करते हैं किसी पासवर्ड मैनेजर से, देन उस पासवर्ड मैनेजर को मैनेज करना, दैट्स अनदर स्टोरी. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स अ प्रॉब्लम वी स्टक विद दैट सिंस द बर्थ ऑफ इंटरनेट. जब इंटरनेट बना और उसके बाद लोगों ने आइडेंटिटी सॉल्यूशंस के लिए एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स ने सोल्यूशन निकाला कि अच्छा यार यूजर नेम एंड पासवर्ड्स बनाते हैं सर्विसेज के लिए. दैट्स इट. दैट वाज द सॉल्यूशन, एंड सिंस देन दैट इज द सॉल्यूशन. देयर हैज बीन नो अपडेट सिंस देन, व्हिच एक्चुअली एंड अप इन अ वे दैट एवरीबॉडी हैव आइडेंटिटी साइलोस. यानी हर वो वेब सर्विस
या वेबसाइट जो सर्विसेज दे रही है इंटरनेट पर, उसका अपना एक आइडेंटिटी साइलो है जो आपकी आइडेंटिटी मैनेज कर रहा है। और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट there was some work that was done, that is done by the so-called identity providers, the big fish, like Google, Facebook, Microsoft. What they did, they came up, they got they got in a federated model with the other people, other industries, and they created a service which was an identity providing service. आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट्स पे होता है login with Facebook, login with Google. That was the second phase of the internet identity, जहाँ पे आपको passwords याद रखने की जरूरत नहीं है. You just click and then you can use that service without having an account. So technically what they do is they use that previous account to associate your and create your identity based on the on the information they get from that identity provider. Now, if you look at this model closely, you will realize that it actually follows pretty similar model than the real world. Real world में भी जब आप किसी पे trust करते हैं, you don't trust people directly, you trust something in the middle. There is somebody as a trust anchor in the middle, which means कि अगर मैंने किसी को पैसे भेजने हैं, तो मैं उसको इंटरनेट पे पैसे तभी भेज सकता हूँ जब उसके और मेरे दरमियान में एक ट्रस्ट एंकर है. इट कुड बी अ बैंक जिस पे हम दोनों ट्रस्ट करते हैं. So I send it to a bank, the bank transfer the money to that guy. All right. And of course, the identity manager in that part is the bank. All right. Now, lack of certainty about कि keyboard के दूसरे end पे कौन है, it has caused a lot of big mess with the data breaches, identity theft, scams, and God knows what. And moving with that, same uncertainty जो है, उसने business transactions को internet पे बहुत hard कर दिया. Now, there are a lot of challenges when it comes to digital identity. Like when we create identity in the real world, हम often हमें कुछ प्रूव करना पड़ता है वो करने के लिए. जैसे कि आप जब बैंक जाते हैं एक नया बैंक अकाउंट खुलवाने, तो वो आपसे बात करते हैं कि अच्छा एक प्रूफ दो कि यू आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और समथिंग दैट कैन एक्चुअली टेल दैट यू लिव हियर, राइट? वरना वो किस बेस पे आपका अकाउंट खोल दें. So you need already something existing to be able to create new identifiers. So in real world, there are a lot of challenges which actually translates into the digital world later on. Or let's say आप उनको कोई identifiers provide करते हैं, let's say your utility bills, CNICs or whatnot, then they can create these identifiers for you, and later on you can use those identifiers on other places based on अगर वो identifiers credible है. जैसे कि your bank statement, जब आप बैंक अकाउंट आपने खुलवा लिया अपने CNIC के बेस पे, तो उस बैंक से जो identifiers निकलते हैं further on, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, let's say your bank statement, you can use that as a proof for something else. Let's say you can prove that you have enough money to travel somewhere, right? So that is trustable based on that the identity provider over there. Okay. And then there's something that is very common that you might have observed, that is sharing of information again and again and again all over the internet. आप जब भी किसी वेबसाइट पर जाके अकाउंट बनाते हैं, they ask you at least these two things. They ask you for your email address, they ask you for your name, and eventually, like I said, there are identity silos all over the internet, which is like a time bomb, जिसमें इंटरनेट डाटा इकट्ठा होता जा रहा है और आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते जा रहे हैं, and there is no end to that. And then like we talked earlier, having online transactions over the internet, it makes it more difficult because the trust layer is missing. All right. And the one more thing that comes in mind is one solution can be, why cannot we send scanned documents then, right? But that's even more worse. I believe people on the call here, they know it better than me. What can you do with the Photoshop, right? आप कोई भी document easily forge कर सकते हैं. So having a legitimacy of a document over the internet is like a thing fairly not been possible in the past. But
but there is something about it now that you can use. There's another interesting thing that happens with your digital identity, which is not in your control. That is having unwanted correlations. जब भी आप ये थर्ड पार्टी आइडेंटिफायर्स को यूज करते हैं, जैसे फेसबुक, लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद गूगल और अदर like parties to log in, they created unwanted correlations of your identity across the internet. आप let's say आपने Coursera पे कोर्स लिया और आपने वहां पे फेसबुक से लॉग इन किया. Facebook knows that you're using Coursera and what you are doing. Coursera knows what you are doing over the Facebook. Or इसी तरह, there are n number of services which are like unwantedly, without your intention, they're sharing your data, creating a digital persona for you, and doing God knows what with that data. And I believe a lot of things are pretty clear for all of us. In last 6 to 5 years, we have seen the issue of Cambridge Analytica. And then I believe in last 1 to 2 years, there was a really big hack on Pakistan's banks, debit card numbers. There was a dump on the dark web. So that's one of the things, the data breaches. Data breaches are one of the big issues when it comes to your digital identity. And having these identity silos, क्योंकि हर बंदा अपना अपना silo manage कर रहा है identity का, it create more attack points for hackers, right? So it's like, instead of one place somebody can get your data, there are now 10,000 places that somebody can get your data. And then on top of that, there are these centralized identifiers, and there's so-called authoritative people that actually control your identity over the internet, which means like they are managing it from the start to the very end, and you cannot do anything about it. Technically, it's your digital identity and you have no control over it. They can always revoke it, they can remove it, they can say that you are locked out, and you have to deal with it. All right, so there's something very interesting here. I got this infographics / there's an app actually on Information is Beautiful, a website, and आप वहां पे जाकर सर्च करें उस वेबसाइट पर world's biggest data breaches and hacks, and you will see कि actual में कितने data breaches and hacks होते हैं. It's a pretty interesting visualization. If you're interested in data, you would be very amazed to see this. And I do recommend, do check it out. And like in this image, if you can see actually how much of people's data has been compromised all over the internet. So even in 2009, like Facebook, around 4.2 million, I believe, have been compromised. And then there are some big names here, even YouTube, MyFitnessPal, Twitter, Quora. And because it is inevitable, sooner or later, somebody is gonna make a mistake and people are gonna get hacked. So saying that somebody is super secure, that's kind of not possible in the real world. So where do we come up with this? We come up with that there was a first generation of digital identity that was created in response to the internet. And हम उसके साथ जब से इंटरनेट बना है तब से स्टक हैं, और यही सोल्यूशन है जो हम यूज करते आ रहे हैं, आई जा रहे हैं और आई जा रहे हैं. एंड उसके बाद the next phase of the second generation of digital identity came in, which was these identity providers, Facebook and Google, but which was much easier, single click sign on kind of abilities, but they exploit your data. They create correlations with your data. Instead of giving you more control as a consumer over your digital persona, they take all of it away. And honestly, they have started to realize it, and world has started to slowly progress toward a different model, which we will talk about soon. But so far, what we did was we talked about the private sector, the private companies like Facebook, Google, or some private application or service providing username or password. But
What about the public sector, like governments, some government services maybe? So those are also technically silos. In Pakistan, things are, I believe, a little bit more different as compared to the international world. Your different services in the government are kind of disconnected, which is even more difficult when it comes to doing anything within the system. And they do follow a paper-based model, जिसमें आपके पास paper-based आइडेंटिटी होती है, जैसे CNIC हो गया, पासपोर्ट हो गया और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया. इट इज डिबेटेबल कि उसमें से कितनी इंफॉर्मेशन आपको एक्चुअल में किसी के साथ शेयर करनी होती है, बट आपको अनफॉर्चुनेटली करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपीज कहाँ पर किस किस के पास हैं इस वक्त आपको भी नहीं पता. आपका CNIC नंबर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पासपोर्ट का नंबर इस वक्त किस किस के पास है, कहाँ आपने जो कॉपीज दी थी उसके ऊपर जो आइडेंटिफायर्स थे और जो इन्फॉर्मेशन थी, उसको कौन किस तरह इस्तेमाल कर सकता है. यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, ऑल्दो यू ओन इट, इट इज योर्स एंड ओनली योर्स ओनरशिप, बट स्टिल आपका उस पर कोई इख्तियार नहीं है. एंड इन द नेक्स्ट फेज ऑफ दैट, देयर इज अ इंटीग्रेशन नाइटमेयर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज, विच मीन्स कि अगर आपने कोई भी पब्लिक सेक्टर की सर्विस को प्राइवेट सेक्टर के साथ इंटीग्रेट करना है, फॉर एग्जांपल बेनजीर इनकम सपोर्ट की एग्जांपल ले लेते हैं. आप चाहते हैं कि जी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो बेनजीर इनकम सपोर्ट को मैनेज करें, देन टेक्निकली यू कैन नॉट, बिकॉज देयर इज नो ब्रिज इन बिटवीन द आइडेंटिटीज ऑफ द यूजर्स जो गवर्नमेंट के पास है और जो प्राइवेट सेक्टर के पास है. there is a people to people, human to human trust, that's it. आप किसी को अपनी शक्ल दिखाते हैं, अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, उसकी कॉपी देते हैं, वो आप पे भरोसा करता है. Besides that, अगर आप यही चीज घर बैठकर इंटरनेट से करना चाहते हैं, पाकिस्तान में there is a possibility, there are solutions out there to do it, but having something like this online is pretty difficult. And talking about compatibility, it is pretty incompatible with the rest of the world. Your digital identity, or in the let's say in the public sector of Pakistan, it's very incompatible with the rest of the world. Besides your passport, I believe passport is the only thing which is somewhat compatible because it follows some international ISO standards when it comes to its creation. But besides that, your driving license, आपका CNIC, आपका I guess, yeah, I believe these two, ये आपके बिल्कुल भी compatible हैं. The moment you leave the territory of Pakistan, they become just cards and papers. You cannot use them to identify yourself. People will not believe that it's from a credible source. So the credibility of your identification should be in your control, and you and only you should have the ability to मैनेज कि कौन कितना देख सकता है और क्यों देख सकता है. और when you should have the ability that किसके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, एंड आप उसको कभी भी वापस ले सकते हैं, या आप ये ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि वो यूज ना करे. नाउ इट साउंड्स वेरी आइडियल एंड sounds bit scary for the business world, but actually it's not, because by giving back the power to the consumer, you open up some new doors for your business, and we'll talk about that soon. But before that, what I want to do is we'll talk about any questions if you have regarding digital identity and its challenges. So feel free, you can, I believe, open up your mics yourself, and we can answer your questions. So yeah, anytime now. And if you don't feel like speaking, आप message भी लिख सकते हैं. I can always reply you via that. Hello. Hello. Ji, Umar, I have a question. I am Adnan. Yes, Adnan.
अमर, एक चीज है कि जैसे अभी आप हम बात कर रहे हैं कि जी जो आइडेंटिटी है वो आपके हाथ में होनी चाहिए, राइट? उसका जो भी कि हम्म आपको उसका कितना शेयर करना है, कितना नहीं शेयर करना है। बट डू हम्म यू थिंक कि जो इस वक्त हमारा, लेट्स से पाकिस्तान, क्या हम्म आपके पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेवल पे जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं हम्म वो गवर्नमेंट लेवल पे ये अलाउ करेंगे कि आपकी आइडेंटिटी की प्योरिटी सिर्फ आप हैंडल करें? somewhat up to some extent, but मतलब I don't know, हम्म it's sort of a हम्म challenge looks to me. What do you हम्म। say about this, you know? देखें, अदनान, राइट? हाँ। या अदनान, मैंने अभी ये सिस्टम्स इधर ईयू में इम्प्लीमेंट किए हैं, ठीक है? मतलब हम्म somewhat of it. There is a different level of governance model that is required in Pakistan. And when I हम्म talk about this ultimate digital identity, it's like कि हम पाकिस्तान के लिहाज से एक एक गवर्नेंस मॉडल बना सकते हैं जिसमें एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर आइडेंटिटी बट यू आर ओनिंग इट। आप अपनी आइडेंटिटी ओन करते हैं, बट when it comes to right like governing it, government will govern it, क्योंकि इशूअर तो एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ही है ना। मेरे पास जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है, इट बिकम्स इनवैलिड जब वो government of मुझे अगर गवर्नमेंट कहती है कि इस बंदे को मैंने सिटीजनशिप नहीं देनी, राइट? हाँ So issuer of that particular digital let's say of that identity, paper identity that I have, passport or CNIC, वो Pakistan government है, and they actually govern it, but I should have more control over it. So when it comes to digital identity and self-sovereign identity, that's the idea. Now the tug of war is कि कितना control किसके पास होना चाहिए. That's exactly completely based on what kind of solutions you build. All right. And it's like जब आप बैठते हैं कि अच्छा यार हमने इस तरह का, हमें एक इस तरह की आइडेंटिटी चाहिए जिसमें इतना कंट्रोल हम यूजर को देते हैं और इतना कंट्रोल हम जो गवर्नेंस मैनेज करें उनको देते हैं, तो that way it can be implemented. Having public sector identities, that's another challenge. right But the beauty of this is that it allows you to do some things जो कि traditional identity नहीं दे सकती, and we'll talk about them moving forward. sure good ठीक है ठीक है All right. हम हर मेजर मॉड्यूल के बाद एक दो सवाल लेंगे, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि अगर हम सवाल ना ले सके तो what we can do is we can do some more Q&A in the end. और अगर फिर भी टाइम नहीं बचता तो what we can do is we can you can email me. I'll drop my email or other contacts by the end of the seminar. All right. Okay. Is there anything else? I guess nope. All right. All right. So what do we prove here? We prove here that the internet has a missing layer of trust, or उससे create होने वाले challenges, we're surrounded by them, and we need to address those issues and find a way to fill this hole in the internet missing layer. Now, we also talked how this affects public sector, because eventually in a good governing welfare society, all these services in the 21st century इंटरनेट पर अवेलेबल होने चाहिए इखलाकी तौर पे। आगे अब हर ऑर्गेनाइजेशन और लेट्स से पब्लिक स्टेट की अपनी जिम्मेदारी है, how do they do it. Now in order to do that, there are certain enablers, so-called concepts we will talk about throughout next few slides, like what is self-sovereign identity and how it can be enabled using DIDs, decentralized identifiers, verifiable credentials, agents, or फिर एक trust over IP protocol. These are some things that would open up your mind about what exactly can we do when it comes to identity management over the internet. Now, before we move forward, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस वेबिनार में इस वक्त ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल हैं, let's say developers, architects,
there is something for you in this webinar. That is, agar aap ye samajhte hain ki all these concepts, how they actually can benefit or how they can actually be used, you can actually build decentralized identity based solutions using blockchain technologies. So that's the sugar for you in this. On the other side, agar aap let's say non-techie hain, business oriented hain, you can see how self-sovereign identity can enable you to do more with your business. Why do you even need to consider it? So that's the question that you can actually find the answer for. और हम उस पर end पे कुछ slides on पे भी बात करेंगे. Now, like I said, we'll talk about these particular enablers like DIDs, verifiable credentials, agents, and how ये और किस तरह ये सारी चीजें मिलकर इंटरनेट को एक more trusted और secure जगह बनाती हैं, and how they fill the void in the missing layer of the internet. That actually brings us to the core of the whole this webinar, that is self-sovereign identity. We talked about earlier कि किस तरह generation 1 थी identity की, जिसमें username and passwords आए क्योंकि internet create हुआ. फिर we were stuck with that for a long period of time through 90s and then 200s, and now we are in 2020 with the same, I guess the around 2015, 16 something, the IDPs, the identity providers came in with so-called single sign-on, जिसमें आप log in with Facebook and Google कर सकते हैं, and that was the second generation. And now there is this third generation of internet identity, which is called self-sovereign identity. Now, how it works is on the left side, you can see that traditional model in which आप हैं और भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, और you guys revolve around certain services like government services, private services. You go, you connect with them, and they create they create multiple identifiers or identities for you, right? Now, how it translates into self-sovereign identity is that you as an individual sit down in the middle, at the core of the whole thing, and all these services connect with you, and you have more authority over your data or identifiers that you share with them. We'll talk about कि issuers कौन है इस identity के, और ये actual में काम कैसे करती है ये identity. We'll jump into that soon. But for now, you can think of it like कि previous model में जो traditional model है, उसमें आप जो हैं multiple service के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन self-sovereign identity में ये सारी services और even के दूसरे लोग जो आपके साथ identity based connections बनाना चाहते हैं, वो आपके इर्द गिर्द घूमेंगे in terms of connections. Now, Dermot Reed जो हैं, इन्होंने basically एक term coin की थी ये self-sovereign identity की, और there is a definition for that कि actual में self-sovereign identity कहते किसे हैं. So अगर इसको लफ्जों में डाला जाए तो you can say कि एक ऐसी identity जो किसी organization, किसी बंदे की या किसी चीज की हो, जो कि लाइफ टाइम के लिए उसके पास रहे और पोर्टेबल हो, मींस ही कैन मूव इट जब उसका दिल करे, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में मूव कर सके उसे, एंड वो किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड ना करती हो और कभी भी उससे वो छीनी नहीं जा सकती. दिस इज द अल्टीमेट डेफिनेशन ऑफ सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी. नाउ इट इज स्टिल डिबेटेबल कि कोई भी आइडेंटिटी जब let's say self-sovereign identity बनती है, तो how much of it is actually strongly self-sovereign. But that's a topic for some other day. Maybe some other time we'll talk about that as well. Now, the whole idea of self-sovereign identity is that you control your own data and you control कि आप उसको दूसरों को कैसे प्रोवाइड करते हैं. ये जिस तरह आप उनको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन लाइन दैट्स ट्रस्टेड एंड सिक्योर, एंड देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी
that is actually controlling your identity, ताकि वो आपसे कभी उसे छीन ना सके आपसे. Which is actually good in many cases when you talk about minorities and minority identities. And then on top of that, there is the blockchain technology that enables a very powerful concept of claims that आप अपनी identity किसी को prove कैसे कर सकते हैं. Because right now, internet पर अपनी identity prove करना is next to impossible. The only thing that works is, I believe, हर बंदा, like I said earlier, हर बंदे का अपना silo है. आप अपने Standard Chartered Bank में login करेंगे. You cannot log in with your Bank Alpha's login credentials. आप let's say government के किसी portal पे login करेंगे. You cannot log in with your Standard Chartered credentials. हर बंदे का अपना एक silo है जिसमें उसकी उसने आपकी identity रखी हुई है, and they control it. Majorly, they can always shut it off. उनका data breach हो गया तो that's completely like gone for you. All right. Now there's a question that comes after that. That is, okay, SSI, then people can self-assert something, right? अगर self-sovereign identity बंदा ऐसे भी तो कर सकता है कि बंदा अपने आप को ही एक आइडेंटिटी इशू कर ले और कह दे कि यार मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूँ, और वो आइडेंटिटी वो किसी के साथ शेयर करे तो अगले बंदे उस पर भरोसा भी कर सकेंगे. लेकिन इट डजंट वर्क लाइक दैट. जस्ट लाइक रियल वर्ल्ड, द आइडेंटिटी नीड्स टू बी इशूड बाय समबडी trustable. So in this case, a self-sovereign identity actually depends on who's the issuer of this identity. So, for example, government can issue your CNIC as a digital identity for you. Your, let's say, your bank can create a digital identity for you, जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं. और let's say आपकी यूनिवर्सिटी आपके लिए डिजिटल आइडेंटिटी बना सकती है, जिसमें आप सारे अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स मैनेज कर सकते हैं. Now, but the beauty of this could be they all will be interoperable, which means they can communicate with each other, and we'll see how. Now, how did we get here? It have taken us a lot of time. Since the birth of internet, there has been evolution step by step of the internet. Like first we were at centralized identity, फिर हम फेडरेटेड आइडेंटिटी पे पहुंचे जिसमें मल्टीपल एंटिटीज हमारी आइडेंटिटी कंट्रोल करती हैं, एंड देन लाइक यूजर सेंट्रिक आइडेंटिटीज हैं जैसे हमारे पब्लिक सेक्टर साइलोज, एंड देन इवेंचुअली आफ्टर आई बिलीव इट्स बिन 20-25 years now, after that this like step by step evolution. ये रातों रात ये आइडिया बिल्ड नहीं हुआ. It has been there for a while. There has been white papers, there has been research on this, and then eventually we are moving toward we are currently moving to a point that is more self-sovereign, in which the portability of your identity is high and the user control is also high, and it has a lot of benefits to it. Now we'll take more questions about self-sovereign identity if you have any. उमर भाई मेरा ख्याल है कंटिन्यू करें. ठीक है, कोई मसला नहीं. We'll move forward. All right. So we talked about that self-sovereign identity is an identity that majorly you control, and it is important who issues it to you. ठीक है, तो basically दो points हैं जो कि इसमें याद रखने वाले हैं. And now we'll talk about its enablers. How can it actually be used in different scenarios? But in order to understand that, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या different elements हैं इसके that are in action when we use it. Now, every identity in let's say in a
in a traditional sector has a user ID or something like that, right? It's not that similar, but it is on the same lines. It's called decentralized identifiers. So using blockchains, आप जब डिजिटल आइडेंटिटी अपनी बनाते हैं या तो आप डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफायर्स बना सकते हैं जो कि बेसिकली ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इंटरनेट पे यूआरएल्स होते हैं. जब भी आप इंटरनेट पे ब्राउजर में यूआरएल डालते हैं, इट रिजॉल्व्स इनटू एन आईपी एड्रेस एंड इवेंचुअली उसके पीछे कुछ सर्वर होता है जिससे वो जाके बात करता है, राइट? सो इट वर्क्स समथिंग लाइक दिस कि आपके पास आप जब भी आप आइडेंटिटी बनाते हैं तो आप डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफायर्स बना सकते हैं, एक से ज्यादा, और उन आइडेंटिफायर्स को यूज करके आप डिफरेंट लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ एक से ज्यादा की क्या जरूरत है? विल टॉक अबाउट दैट. नाउ it has some properties like it's globally unique. Every time there are technically two type of DIDs, the public ones and the private ones. Public ones जो आप सबके साथ शेयर करते हैं, और private ones जो सिर्फ आप certain relationships जिनके साथ होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं. So for as an example, मैं मेरी identity create होती है, मुझे let's say मैं अपनी identity create करता हूँ खुद, और उसके बाद मैं connection बनाता हूँ पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट के साथ. तो मैं उनके साथ जो कनेक्शन बनाऊंगा उसके लिए एक अलग डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफायर बनेगा. What it will do is it will enable me and enable that organization which I'm connected to have a cryptographically verifiable data stream and allow us to do much more things like having credentials and proofs, which we will talk soon about. Coming slides में हम उस पर बात करेंगे. Now, DIDs are a very important concept because they make your identity, they're not like your traditional IDs. They give you more control. They are controlled by you and only you, and there is no central authority who's managing them. सिर्फ आप उसको delete कर सकते हैं, और उसकी जो private keys हैं वो आपके पास होती हैं एक wallet में. It's provable, which means क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन की मदद से हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेडेंशियल्स बना सकते हैं. जैसे जिस तरह आपका रियल वर्ल्ड में आपका CNIC होता है, आप उसका डिजिटल वर्जन बना सकते हैं. दैट इज पॉसिबल टू गेट, दैट्स पॉसिबल टू बी प्रूव्ड डिजिटली. सो इमेजिन इफ आई वांट कि मैं अपना CNIC इंटरनेट पे किसी को अपना CNIC के थ्रू अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकूं. सो करंटली the ways we have is something like कि अच्छा यार, I think the only way right now is to have a connection with the Nadra database. उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर नादरा वेरीफाई नहीं करेगी आपका CNIC नंबर, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप उस आइडेंटिटी के मालिक हैं? और आपका CNIC नंबर तो मेरे ख्याल से इस वक्त पब्लिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जितनी कॉपीज हम करवा के लोगों को देते हैं उस लिहाज से तो वो इजीली किसी भी सिम की दुकान से मिल सकता है, और एटलीस्ट हमारा नहीं तो किसी और का मिल जाएगा. सो हाउ डू यू एक्चुअली कंट्रोल दैट कि इवन दो किसी के पास आपका आइडेंटिफायर भी है, तो स्टिल ही कैन नॉट प्रूव दैट ही इज यू and do something bad with it. That's why decentralized identifiers are used, or it can enable that. Or there is more to them. We can actually do another webinar whole series on the DIDs. It's so big of a concept on its own. But keeping it concise, it also opens a secure communication line, which means जिसके साथ भी आप DIDs these decentralized identifier exchange करते हैं, अपना उसे DID देते हैं और उससे उसका DID लेते हैं, उसके साथ आप एक सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन ओपन कर सकते हैं, और उसके साथ आप जो भी बात करेंगे वो एक इनक्रिप्टेड चैनल पे होती है, तो कोई भी थर्ड पार्टी उससे नहीं सुन सकती. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कोई भी कोरिलेटेबल रिलेशनशिप्स नहीं बनाता, विच मीन्स कि अगर मेरी डिजिटल आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और सब सॉवरेन आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है DIDs के थ्रू,
तो और मैं फेसबुक से कनेक्ट करता हूँ, और मैं गूगल से कनेक्ट करता हूँ, और मैं कोर्सेरा से कनेक्ट करता हूँ, तो मैं हर सर्विस जो यूज करूंगा उसके लिए एक अलग DID यूज करूंगा, जिसकी वजह से इवेंचुअली वो आपस में कोरिलेशंस क्रिएट नहीं कर सकते मेरी आइडेंटिटी के, और फिर वो मुझे डिफरेंट एड्स और मेरे डेटा की जो मेरी इंटरनेट पे जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर नहीं कर सकते वो. नाउ इट साउंड्स लाइक मार्केटिंग नाइटमेयर, बट इट्स नॉट. द थिंग इज इट अलाउज यू टू डू इट, इट गिव्स यू कंट्रोल बैक. अभी आपने सुना होगा रिसेंटली यूरोप में GDPR इनिशियलाइज हुआ है, जिसमें ये सारी चीजें कवर की हैं उन्होंने, कि आपका डेटा आपकी इजाजत के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, कौन कितना देख सकता है, वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को ट्रैक नहीं कर सकती. ऑल ऑफ दीज पॉलिसीज आर इन दैट नाउ, एंड आई बिलीव सूनर और लेटर पाकिस्तान में भी कोई डिजिटल पॉलिसी आएगी जो कि डेटा को रेगुलेट करेगी इंटरनेट पे. इवन दो अगर नहीं भी आती, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू डू दैट, एंड इवन लोग अनएथिकल प्रैक्टिस करें भी, स्टिल अगर आप यूजर को DID बेस्ड आइडेंटिटीज देते हैं, तो what you are enabling them to do is something far beyond what you can do with a traditional identity of username and passwords, which is being able to prove that कि कीबोर्ड के दूसरी साइड पे जो बंदा बैठा हुआ वो एक्चुअल में वो वही बंदा जो वो कह रहा है. नाउ वी टॉक्ड अबाउट कि हम अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं. नाउ हाउ कैन वी एक्चुअली डू इट? टू अंडरस्टैंड दैट हमें रियल वर्ल्ड का जो मॉडल है उससे डिजिटल वर्ल्ड के मॉडल पे आना पड़ेगा. तो रियल वर्ल्ड में जो मॉडल है वो पेपर क्रेडेंशियल्स, लाइक योर पेपर बेस्ड, आपकी आपकी मैट्रिक की सनत दैट प्रूव्स दैट यू आर, आपने मैट्रिक किया है, आपका CNIC दैट प्रूव्स आप पाकिस्तानी सिटीजन है, योर your passport that tells that you have document to travel, things like that. और ये जो मॉडल है, पेपर बेस्ड मॉडल है, ये काफी पुराना है. इट्स एज ओल्ड एज पर्शियन एम्पायर, जब खतों के ऊपर वैक्स की सील्स लगाकर भेजी जाती थी और दूसरी साइड पर वो वैक्स की सील वैलिडेट होती थी कि ये सील इनवैलिड तो नहीं है, और अगर ये जो एनवेलप है ये खुला तो नहीं था पहले, और सिर्फ एक ट्रस्टेड सील्ड एनवेलप ही ट्रस्ट पर भरोसा किया जा सकता था उस दौर में. नाउ वी हैव बीन यूजिंग द सेम मॉडल बट समवट एडवांस. हाँ, माना उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड भी एग्जिस्ट करता है, बट इवेंचुअली द अंडरलाइनिंग आई वुड से डेफिनेशन इज एक क्रेडेंशियल, एक ऐसी पेपर बेस्ड क्रेडेंशियल एक ऐसी चीज है जो एक ऐसी अटेस्टेशन ऑफ है, या ऐसी अटेस्टेशन ऑफ क्वालिफिकेशन है या कॉम्पिटेंस जो कि किसी अथॉरिटी ने इशू की है आपको, एंड दैट अथॉरिटी कैन बी एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन. सो विच मीन्स कि जरूरी नहीं है कि एक क्रेडेंशियल या फिर एक क्रेडेंशियल आपको ट्रैफिक पुलिस ने ही इशू किया. तो ट्रैफिक पुलिस ने आपको जो आपका लाइसेंस इशू किया है वो एक क्रेडेंशियल है. तो बट एट द सेम टाइम आपकी कंपनी जो है जिधर आप काम करते हैं वो आपको एक क्रेडेंशियल इशू कर सकती है कि आप उनके एम्प्लॉय हैं, ताकि आप कल को कहीं और प्रूव कर सकें भाई मैं यहाँ काम करता हूँ. सेम गोज फॉर यूनिवर्सिटीज, वो आपको आपकी डिग्री क्रेडेंशियल एज अ क्रेडेंशियल इशू कर सकते हैं ताकि आप कल को प्रूव कर सकें कि यार मैं तो इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ या मैंने यहाँ से डिग्री की हुई है. ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग राइट नाउ इन अ पेपर बेस्ड मॉडल, ऑलराइट. और what self-sovereign identity does, it takes this whole trust-based model, क्योंकि at the end of the day आप इंटरनेट पे किसी की ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उस पे भरोसा नहीं करते. आप कहते हैं मुझे ओरिजिनल पेपर दो, मैं चेक करूंगा, मैं वेरीफाई करूंगा, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं आपको आपका बैंक अकाउंट खोल दूंगा, या मैं आपको एडमिशन दे दूंगा यूनिवर्सिटी में, या वट एवर द रीजन इज फॉर द प्रोसीडिंग. नाउ the paper based credentials, टेक्निकली दुनिया के जितने भी पेपर बेस्ड क्रेडेंशियल्स हैं वो तीन चीजें करते हैं. वो ये बताते हैं कि उसे इशू किसने किया, उसका होल्डर कौन है, और वो जो क्लेम आपके पास है वो कहीं फोर्ज्ड या अल्टर्ड तो नहीं है. सो टॉकिंग मोर अबाउट दैट, इट्स लाइक इन एन एग्जांपल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इशू किसने किया है, ट्रैफिक पुलिस ने, तो इशूअर ट्रैफिक पुलिस है. उसका होल्डर कौन है, आप हैं, क्योंकि वो आपके लिए इशू हुआ है.
और कहीं वो अल्टर्ड तो नहीं है, यानी कि आपने किसी ने उसके साथ उसके ऊपर कोई फॉर्जरी तो नहीं की, उसका लेट्स से उसकी कॉपीज बना के उसके ऊपर से एक्सपायरी डेट चेंज कर रहे हैं या मार्कर्स रिमूव कर रहे हैं और समथिंग लाइक दैट। सेम गोज फॉर डिग्रीज इशू किसने की हैं, उन्हें होल्ड कौन कर रहा है, आप होल्ड कर रहे हैं, इशू किसने किया, यूनिवर्सिटी ने किया है, और कहीं वो अल्टर्ड तो नहीं है, कहीं उसके ऊपर किसी किस्म का कोई फॉर्जरी तो नहीं हुई, किसी ने ऊपर से CGPA या डेट वगैरह चेंज तो नहीं की। एंड ऑल ऑफ दैट टेक्निकली गोज डाउन टू ह्यूमन कैपेसिटी, जहां पे आप ये फिगर आउट करते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट फोर्ज तो नहीं है। उसमें ऑफ कोर्स फिर आपको प्रोफेशनल्स चाहिए और या फिर आपको ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन को वो डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है टू वेरीफाई दैट। नाउ आइडियली इन एन आइडियल वर्ल्ड जो पेपर बेस्ड क्रेडेंशियल्स हैं वो इस तरह काम करते हैं, अगर फोर्ज्ड नहीं है, अगर उसमें कोई किसी किस्म की भी हेरा फेरी है, तो दिस मॉडल्स हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। नाउ मूविंग टू वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स, हमने पेपर बेस्ड क्रेडेंशियल्स की बात की, अब हम वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स की बात करेंगे जो कि डिजिटल मॉडल है पेपर क्रेडेंशियल्स का। और इसको इनेबल करने के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड सब सॉवरेन आइडेंटिटी हम यूज करते हैं, और उसमें फिर वो DIDs जो जिनकी हमने पहले बात की, हम वो यूज करेंगे ताकि वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स इंप्लीमेंट हो सके, इनका जो मॉडल है वो एग्जिस्टेंस में आ सके। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्लॉकचेन गारंटी करता है कि जितना भी डाटा एक वेरीफाइबल क्रेडेंशियल में वो ऑथेंटिक है। उसके पीछे जो अंडरलाइनिंग क्रिप्टोग्राफी है उसकी टेंशन सारी की सारी ब्लॉकचेन की है। वो इशुअर, वेरीफायर, होल्डर, उनको टेंशन ही नहीं है कि ये जो वेरीफाइबल क्रेडेंशियल है इसकी ऑथेंटिसिटी किस हद तक है या किस हद तक नहीं है। दूसरी चीज, वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स जो हैं वो सिंपल डॉक्यूमेंट्स की तरह नहीं होते कि कोई भी बना ले, उनकी इशुइंग कॉम्प्लेक्स होती है, जिसकी वजह से उनको फोर्ज करना, इवन कि अगर कोई फोर्ज करने की कोशिश भी करता है, सो इट्स हाईली लाइकली कि उनको कोई फोर्ज कर भी सके। नाउ जस्ट लाइक पेपर बेस्ड मॉडल्स, वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स जो हैं वो भी ऑलमोस्ट उतनी ही चीजें प्रूव करते हैं जितनी एक पेपर बेस्ड क्रेडेंशियल करता है। जैसे कि एक वेरीफाइबल क्रेडेंशियल ये बताता है कि उसे इशू किसने किया है। सो लेट्स से इन केस ऑफ अ let's say digital identity, let's say in case of a degree, आप ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ने वेरीफाइबल क्रेडेंशियल इशू किया है डिग्री का, तो मेरे पास एक डिजिटल क्रेडेंशियल होगा जो ये बताएगा कि मेरे पास डिग्री है यूनिवर्सिटी की। फिर दूसरा फैक्ट ये है कि कहीं वो फॉर्ज तो नहीं है, यानी कि उसमें कोई हेराफेरी तो नहीं है, वो क्रिप्टोग्राफिकली ब्लॉकचेन मैनेज कर लेगा सारा का सारा। देन कहीं वो क्रेडेंशियल रिवोक तो नहीं हुआ, दैट्स समथिंग न्यू, व्हिच मींस कहीं किसी ने मेरी डिग्री कैंसिल तो नहीं कर दी पीछे से। इन केस ऑफ लेट्स से ड्राइविंग लाइसेंस, कहीं मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर तो नहीं है, उसको डिजिटली वेरीफाई करना है, तो वो वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स जो हैं वो भी प्रूफ करते हैं। नाउ दिस इज हाउ द मॉडल लुक्स लाइक व्हिच वी टॉक्ड अबाउट ब्रीफली, कि एक इश्यूअर जो है वो होल्डर को वेरीफाइबल क्रेडेंशियल देता है, और जो होल्डर है वो अपने पास उस क्रेडेंशियल को रखता है। उसके बाद कोई भी वेरीफायर उस क्रेडेंशियल को एक प्रूफ से वेरीफाई कर सकता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि रियल वर्ल्ड मॉडल से बहुत ज्यादा मैच करती है वो ये है कि लेट्स से आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपको ट्रैफिक पुलिस ने रोका और उन्होंने कहा कि यार चालान है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। आपने उनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया, उन्होंने आपका ड्राइविंग लाइसेंस पकड़ा और कहा, वो उस वक्त हेड ऑफिस कॉल करके ये नहीं पता करते कि यार इसका ये जो ड्राइविंग लाइसेंस ID नंबर XYZ ABC whatever ये वैलिड है कि नहीं। दे ट्रस्ट दैट ड्राइविंग लाइसेंस बिकॉज उनको पता है कि इशूअर जो है इसका वो ट्रस्टवर्थी है। सेम गोज फॉर अ वेरीफाइबल क्रेडेंशियल, बिकॉज जब आप एज अ होल्डर आपके पास कोई वेरीफाइबल क्रेडेंशियल होगा और आप उसका प्रूफ किसी वेरीफायर को देते हैं, उसको डिजिटली टेक्निकली किसी भी इशूअर से बात करने की जरूरत नहीं है उस वेरीफाइबल क्रेडेंशियल को वैलिडेट करने के लिए। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया, तो आई रिपीट इट। इट गोज लाइक दिस कि जस्ट लाइक रियल वर्ल्ड, अगर आपको कोई डिजिटल क्रेडेंशियल इशू करता है और आप उसको प्रूव करना चाहते हैं किसी को, तो जो बंदा उसको वेरीफाई करेगा उसको बेसिकली
जिसने इशू किया उससे बात करने की जरूरत नहीं है, वो उस प्रूफ के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है यूजिंग, बिकॉज उस प्रूफ के अंदर जो क्रिप्टोग्राफिकली एम्बेडेड इंफॉर्मेशन है वो ये वेरीफाई करती है कि ये प्रूफ जो है ये वैलिड है और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है. दिस इज समथिंग विच इज वेरी पावरफुल व्हेन इट कम्स टू सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी. और हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे later on. All right. Like we talked about this earlier, this one particularly, how CNIC number and passport copy problems is always there, and how you can actually technically with verifiable credentials you can get rid of the whole thing. Imagine you have a mobile app जिसमें आपका CNIC as a verifiable credential आ गया. कल को कोई आपसे कहता है यार आपने जाना सिम निकलवाने, आप सिम निकलवाने जाते हैं, कहता है यार पासपोर्ट की कॉपी चाहिए या फिर वेरीफाइबल क्रेडेंशियल दिखा दो. आप उसको अपना वेरीफाइबल क्रेडेंशियल दिखाएंगे, ठीक है. जो उसका टेक्निकल प्रोसेस है दैट्स समथिंग आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस वेबिनार, बट इवेंचुअली व्हाट वुड हैपन इज जो वेरीफाइबल क्रेडेंशियल आपके फोन में होगा वो ट्रस्टेबल है as equal as the actual CNIC in your pocket. Now, like I said, the data is provable. All right. Important thing one more, that is के ये जो verifiable credential है एक digital wallet में store होता है, और that digital wallet can be in let's say a phone, a computer, cloud computer, somewhere. It depends आप कहाँ store करते हैं. आप उसको एक paper पे भी लिख के रख सकते हैं अगर आपका दिल करे तो. Now, this brings us to one more important concept, that's zero knowledge proofs. Maybe आपने इसके बारे में सुना हो पहले. आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि verifiable credentials में एक extended feature है ये. Think of it like कि एक verifiable credential, digital credential जो है वो कुछ चीजें prove करता है. So in an example of university degree, मुझे अगर मेरी यूनिवर्सिटी एक डिग्री का वेरीफाइबल क्रेडेंशियल इशू करती है जो ये बताता है कि मेरे पास कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस की डिग्री है 3.2 CGPA की, तो मैं उसको कहीं भी प्रूव कर सकता हूँ, राइट. मैं वो क्रेडेंशियल, डिजिटल क्रेडेंशियल किसी को भी इंटरनेट पे भेजूंगा, वो उससे वेरीफाई कर सकता है हाँ भाई ये बंदा वाकई इसने यहाँ से डिग्री की हुई है और इसका CGPA भी 3.2 ही था, ये झूठ नहीं बोल रहा, और दैट्स ट्रस्टेबल 100%. But there is more to it. एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है इस तरह के केसेस में जो कि हमारी आममरा जिंदगी में भी बहुत कॉमन है, दैट इज गिविंग मोर इंफॉर्मेशन मोर देन रिक्वायर्ड. जैसे जब आप किसी को अपना शनाख्ती कार्ड पकड़ाते हैं सिर्फ हाथ से कि यार वो आपका लेट्स से सिर्फ वेरीफाई करे कि यार इसका शनाख्ती कार्ड इसी का है ना, तो या ये बंदा 18 साल से ऊपर का है ना, तो वो आपका नाम भी देख सकता है उस कार्ड से, वो आपका घर का एड्रेस भी देख सकता है, वो आपकी तरीके पैदाइश भी देख सकता है, वो आपका नंबर और कहते हैं CNIC नंबर, फैमिली नेम, फैमिली नंबर, सारा पूरी इंफॉर्मेशन उसको विजिबल है. लेकिन जीरो नॉलेज प्रूफ्स यूज करके आप उस बंदे को सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जितनी उसको चाहिए, या उस इंफॉर्मेशन का मेटा डेटा दे सकते हैं. एग्जाम्पल, इमेजिन आपने किसी को अपना CNIC दिया और उस CNIC पे सब कुछ ब्लैंक हो गया और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि टेक्निकली उसने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखनी है, तो आपको उसको अपना नाम, एड्रेस, शक्ल, ये सारी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है. जीरो नॉलेज प्रूफ्स डिजिटल वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स के साथ एग्जैक्टली ये हरकत करते हैं. आप कोई भी चीज सिलेक्टिव डिस्क्लोजर के तहत या तो छुपा सकते हैं या तो दिखा सकते हैं, या फिर आप कुछ इंफॉर्मेशन कंप्लीटली छुपा सकते हैं. जैसे आप एक क्रेडेंशियल बना सकते हैं जो ये बताए कि यार ये बंदा +18 है, इसकी एज 18 प्लस है कि लेस देन 18 है. सो फॉर दैट केस डेट ऑफ बर्थ भी किसी की शेयर नहीं होगी, जस्ट ये शेयर होगा कि ये +18 है कि लेस देन 18 है, दैट्स इट. सो ऑल ऑफ दिस इज इनेबल्ड बिकॉज आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफायर्स थे, DIDs थे, उनके थ्रू आपने वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स बनाए और उन वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स के अंदर आपने जीरो नॉलेज प्रूफ्स डाले. नाउ आई नो देयर इज अ लॉट टू टेक इन, बट मेरी कोशिश थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाऊं, सो इसलिए आई मेड अ बिट इंटेंसिव.
stuff. But if there are any questions, I'll be happy to take them. There is a little bit more coming in. I guess we are almost 60% through. No, not 60 actually, 75% through. So we will be probably staying for maybe 30-44 minutes. So अगर कोई सवाल है तो please go ahead. You can always ask or text. I guess not. All right, moving forward. हमने बात की किस तरह सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी इनेबल करने के लिए हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफायर्स हैं, DIDs हैं, वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स, VCs और फिर जीरो नॉलेज प्रूफ्स हैं। ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं तो रिजाइड करती हैं ना। ये रिजाइड करती हैं आपके सो कॉल्ड एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको नाम दिया गया है एजेंट्स का। एजेंट्स और उन एजेंट्स के अंदर वॉलेट्स होते हैं। सो ये सारी चीजें आपके एजेंट्स हैंडल करते हैं और आपके वॉलेट में स्टोर होती हैं। सो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक कि आपके फोन में एक ऐप है जिसमें एक एजेंट रन हो रहा है और वो एजेंट के अंदर एक स्टोरेज है जिसको हम वॉलेट कहते हैं, और उसके अंदर आपको जब भी कोई क्रेडेंशियल कोई ऑर्गेनाइजेशन इशू करेगी तो वो उस वॉलेट के अंदर स्टोर हो जाएगा और आपका DID वगैरह सब कुछ उसमें स्टोर हो जाएगा। एक बड़ा ही अच्छा डेमो है जो कि हम सेमिनार के एंड पे करेंगे। मैं आई विल शो यू लाइव डेमो कि how it actually works in action. Now, what happens here is it's quite similar to a password manager. अगर आपने one password use किया है तो you can correlate to that. तो it manages a password, but it is much more powerful. और ये जो agent है आपके फोन में, ये बिल्कुल एक WhatsApp ऐप की तरह काम करता है। आपने ऐप खोली, you can message other people, other organizations, other people you are connected with, and then you can issue credentials to people, you can receive credentials from people or organizations. So it's a very dynamic thing, eventually giving you more control over your digital persona. But like I said earlier, जैसे अदनान ने सवाल भी किया पहले कि इसका जो गवर्नेंस मॉडल होगा वो जिसने आइडेंटिटी इशू की है वो डिजाइन करेगा। सो उस आइडेंटिटी की पावर कितनी है इवेंचुअली, दैट इज द इशूअर्स प्रॉब्लम। बट उसका ओनर कौन है आइडेंटिटी का, वो आपके पास उसकी ओनरशिप आपके पास आ जाएगी, जो कि अभी करंटली केस नहीं है ट्रेडिशनल सिस्टम्स के साथ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है which is we talked about earlier the missing layer of the internet, the missing trust layer of the internet. Technically right now as we speak, there is a huge group of online contributors of Hyperledger and Sovereign and Everenum जो के काम करें, even my company is currently working on this, जो के इंटरनेट पे एक ट्रस्ट लेयर पे काम करें, जो के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स बिल्ड कर रही है जिनके थ्रू हम इंटरनेट पर ट्रस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी करंटली आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट करते हैं HTTP प्रोटोकॉल से, राइट, एंड देन देयर इज SSL बेस्ड HTTP, HTTPS, सो समथिंग सिमिलर टू दैट। एंड और ये सारा का सारा, यू डोंट नीड टू गेट टेक्निकल इन ऑल ऑफ दिस, ये सारा का सारा जो है हाइपरलेजर इंडी, एरीज और हाइपरलेजर उर्सा के अंदर डिफाइंड है। All you need to do is to use these and build the solutions for your organization, for yourself, or whatnot. So, अगर आप इस फोटो को देखेंगे इस वक्त, तो you will see different layers. So, from the bottom level, you see actually on the top level, on the left side there is human trust or technical trust. ठीक है? So, or human trust is like slight skinish color, or technical trust is purplish. So जहां पर इस फोटो में सेंटर से कट लग रहा है और उससे ऊपर ह्यूमन ट्रस्ट शुरू हो रहा है और उससे नीचे टेक्निकल ट्रस्ट है। जो नीचे टेक्निकल ट्रस्ट लेयर है जिसमें एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन हो रही है, कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, और उसके नीचे DID मेथड्स जो लेयर 1 में पब्लिक लेजर में, दैट्स ऑल ब्लॉकचेन बेस्ड। And then on the layer 3 there is this software based agents, और फिर layer 4 जहां पे governance framework आता है कि इस identity
की अलाउंस कितनी है, ये क्या कैपेबिलिटीज रखती है, और इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं. लेकिन इवेंचुअली it goes deep down into the layer 1, into the public ledgers, where all the cryptographic magic happens and all the blockchain based things happen. Agar aap trust over IP में interested हैं, very important, very interesting video by Internet Read, इसमें link available है. When I'll share the slides with you, you will find out. So do watch it, I recommend it. और एक RFC भी है. It's more like a GitHub's document that you can read. It tells about कि actual में trust over IP चलता कैसे है और इसका purpose क्या है. So trust over IP is a very in-depth topic, and I personally didn't want to go too deep into this. So इसको हम यहीं तक रखेंगे, but perhaps we could do more some other day. So like I said, I'll be keep asking you if you have any questions after every major module. So अगर आपको कोई सवाल है रिलेटेड टू एजेंट्स जो कि आपकी डिजिटल आइडेंटिटी को मैनेज करते हैं या ट्रस्ट ओवर आईपी से रिलेटेड, सो फील फ्री टू आस्क. All right, I guess you can always send a message. Oh yeah, there's something else. I was thinking maybe we will do another webinar sometime soon regarding agents and verifiable credentials. It will be more of a like hands-on, could be a bit technical, about going in depth about कि agents हैं क्या, ये काम कैसे करते हैं, और इनको इस्तेमाल करके आप verifiable credentials कैसे receive कर सकते हैं, issue कर सकते हैं. It will be more about using like ये Hyperledger technologies use करके कैसे किया कैसे जा सकता है. Because before jumping into the tech and all the fancy stuff, मैं चाह रहा था कि आप पहले ये जो concepts हैं, they need to be delivered, and once everybody know about it, let's say technical or non-technical, then you can actually think about actually building something, or think about building a, like designing a solution even. अगर आपने उसको develop नहीं भी करना, तो even to think about it, you need to understand कि verifiable credentials होते क्या हैं और मुझे ज़रूरत ही क्यों है उनकी. So moving forward, Hyperledger identity technologies, जिनकी हमने अभी जितने भी concepts की हमने बात की, from DID to verifiable credentials, जो कि paper models का digital version है, and then from there to trust over IP, and then agents, के agents वो softwares हैं जिन्हें use करके हम DIDs और verifiable credentials को control कर सकते हैं. All of that can be built with these technologies, these three technologies. Now, अगर आप developer हैं या architect हैं, so your focus should be on Hyperledger Aries, because everything else is kinda in-depth about blockchains, and Aries is more about building decentralized identity solutions. Moving forward, a little bit about the history. Around 2017 में 2016 में Sovereign करके एक organization है जिसने एक white paper issue किया था, The Inevitable Rise of Self-Sovereign Identity. Link इस slides के end पे, जिसने ये concept शुरू किया था कि we need to start working on a digital identity network. उन्होंने एक network start किया जो self-sovereign identity को implement करता, और उन्होंने जो कोड इनिशियल लिखा ना, वो उन्होंने डोनेट किया हाइपरलेजर फाउंडेशन को, जो कि लेटर ऑन 2017 में हाइपरलेजर इंडी का प्रोजेक्ट बना. जैसे जैसे अब ये जो हाइपरलेजर इंडी का प्रोजेक्ट है 2017 में जो बना, इसके अंदर ये सारी खसूसियात हैं कि इट कैन अलाउ यू टू क्रिएट वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स, digital verifiable credentials, zero knowledge proofs, DIDs, decentralized identifiers, or you can do that by using its SDK, जो कि different programming languages में available है easily. Now, we'll talk about what kind of ledger it is, but before that, Ursa. जैसे
हाइपरलेजर इंडी थोड़ा सा ग्रो हुआ और उसमें जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स यूज होने शुरू हुए जो कि सारे मैथमेटिकल क्रिप्टोग्राफी मैनेज कर रहे थे और साथ सिक्योर कम्युनिकेशन एनेबल कर रहे थे, दे रियलाइज्ड कि डिफरेंट हाइपरलेजर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे हाइपरलेजर सॉटूथ, हाइपरलेजर फैब्रिक, दे कैन यूज दीज एल्गोरिथम्स एंड ऑफ क्रिप्टोग्राफी। सो उन्होंने किया ये कि उन्होंने जो इंडी क्रिप्टो का जो मॉड्यूल था ना पूरा का पूरा हाइपरलेजर इंडी में, उन्होंने वो उसमें से अलग किया और उसको एक अलग हाइपरलेजर का प्रोजेक्ट बना दिया जिसका नाम है हाइपरलेजर उर्सा। सो हाइपरलेजर उर्सा इज ऑल अबाउट cryptography and cryptographic algorithms and how can other hyperledger projects integrate with this Ursa and do more stuff. So agar aap cryptography mein interested hai, so that's the way to go for it. And then Hyperledger Aries. Later on, if I remember it correctly, Hyperledger Indy was the main thing and then Ursa was the next thing. But after some time they realized कि यार हाइपरलेजर इंडी के अलावा भी लोग आइडेंटिटी ब्लॉकचेन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनमें से कोई एक और ब्लॉकचेन ऐसा स्टैंडर्ड बन जाए जो कि फ्यूचर में यूज हो। तो फिर तो इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज होंगे, यानी कि दूसरे ब्लॉकचेन्स के साथ बात नहीं कर सकते और कम्युनिकेट नहीं कर सकते और इन वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स को शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं। वो जो ट्रस्ट ओवर आईपी का प्रोटोकॉल्स हैं वो उनको फॉलो नहीं करेंगे। तो उन्होंने किया ये कि उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया हाइपरलेजर एरीज के नाम से, जिसका पर्पस ये है कि इट इज गोना बी ब्लॉकचेन एग्नोस्टिक। एंड बाय सेइंग बीइंग ब्लॉकचेन एग्नोस्टिक आई मीन कि इट डजंट मैटर कि इसके बैकएंड पे आप ब्लॉकचेन कौन सा यूज करते हैं, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स। आप वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स बना सकते हैं, आप आइडेंटिटीज क्रिएट कर सकते हैं, आप DIDs बना के लोगों से बात कर सकते हैं, आप आइडेंटिटीज इशू कर सकते हैं। all the like flavors and all the magic of digital identity and self-sovereign identity is incorporated into Aries, and what you can do is आप उसको लेकर हुक कर सकते हैं इथेरियम में, हुक कर सकते हैं फैब्रिक में, हुक कर सकते हैं हाइपरलेजर इंडी में। एंड देन व्हाट वुड इट डू, अगर इथेरियम, फैब्रिक, सॉटूथ उनमें वो सारी एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंटेड हैं जो कि वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स इशू करते हैं, वेरीफाई करते हैं, प्रूव करते हैं, वो सारे क्रिप्टोग्राफी सब इंप्लीमेंटेड है, तो एरीज वुड वर्क सीमलेसली विद दैट। सो इट डजंट मैटर कि आप ब्लॉकचेन पार्ट पे क्या यूज कर रहे हैं, it matters what you're using on the framework level. So Aries is like a toolbox that will allow you to build decentralized applications for identity management. So like I said, agar aap developer hain ya architect hain, Aries is the way to go. All right. So but right now, since Indy has started early, it's like ahead in the game from everybody else. So Hyperledger Indy सबसे आगे है। So अगर आप एरीज की एप्लीकेशन डेवलप भी करते हैं या कोई बड़ा ग्रैंड स्केल सोल्यूशन बनाते हैं एरीज का, तो इवेंचुअली उसके पीछे हाइपरलेजर इंडी ही चल रहा होगा एज अ लेजर। सो वी टॉक अबाउट कि इंडी किस तरह का ब्लॉकचेन है। इंडी इज नॉट लाइक योर यूजुअल फैब्रिक और सॉटूथ और बुरो समथिंग लाइक दैट। वो सारे ब्लॉकचेन्स जितने भी हैं वो प्राइवेट और परमिशनड नेटवर्क्स हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं बॉटम राइट साइड पर कि there are these public permissionless like Bitcoin, Ethereum or IOTA and all, and then there are these private permissioned like Hyperledger Fabric, Sawtooth and Corda. But Indy is quite different. Indy is public and permissioned. It makes it very unique. The reason is कि रीड कोई भी कर सकता है इस ब्लॉकचेन से, which means कि आप अगर आइडेंटिटी इशूअर हैं, आप ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन राइट करने के लिए आपको परमिशन चाहिए। तो इसका मतलब अगर आप इशूअर हैं क्रेडेंशियल के, तो आपके पास स्पेशल राइट्स होने चाहिए ब्लॉकचेन यूज करने के। लेकिन अगर आप एक आम यूजर हैं, आपके पास हाथ में एक सो कॉल्ड एजेंट वॉलेट है जिसके अंदर आपकी आइडेंटिटी है और सारा कुछ हो रहा है, तो यू डोंट नीड टू, you can just read from this ledger. You don't need to be part of the network to like you don't need to be actually
so in depth incorporated with the network, or Aries will take care for all of that. One more important difference, key difference between other blockchains and this one, Indy, is smart contracts. Indy में smart contracts नहीं है क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है. Why? That's a story for another day. Now, data very crucial. European Union especially has been very tight regulated on that कि जी डेटा यू से बाहर नहीं जाना चाहिए, और प्रॉब्ली हर कंट्री का यही होता है. पाकिस्तान का भी ये होगा कि यार कोई भी सर्विसेज का डेटा पाकिस्तान से बाहर ना जाए. पाकिस्तान की नादरा की डेटाबेस कोई भी इंडिया या यूएई में होस्ट नहीं करेगा उसकी सर्विसेज. So which lets us to the question that what kind of data goes into the Hyperledger Indy. Technically, no private data goes into the Hyperledger Indy. So the question is then, okay, data kaun sa jata hai phir? So your public DIDs, which means your decentralized identifiers, जो आपके IDs हैं, decentralized IDs, जो आप चाहते हैं कि दुनिया को पता हो ताकि वो आपसे कनेक्ट कर सकें. वो स्कीमास, जिस तरह डेटाबेस का स्कीमा होता है वैसे ही क्रेडेंशियल का एक स्कीमा होता है जो बताता है कि यार इस क्रेडेंशियल के अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं. फॉर इन केस, सो इन फॉर एग्जांपल ऑफ CNIC का क्रेडेंशियल स्कीमा ऐसा होगा कि उसमें नाम है, फादर नेम है, एंड देन जेंडर है, और फिर CNIC नंबर है, और इस तरह की एट्रीब्यूट्स होंगे. क्रेडेंशियल डेफिनेशंस एंड रेवोकेशन रजिस्ट्रीज. रेवोकेशन रजिस्ट्री पे मैं थोड़ी बात करूंगा. ये यूज इसलिए होती हैं ताकि आप क्रेडेंशियल्स को रिवोक कर सकें. फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस, मुझे ट्रैफिक अथॉरिटीज ने ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया, 4 साल बाद उन्होंने उसे एक्सपायर करना है. मेरे पास कार्ड फिर भी रह जाता है अपने पास हाथ में. डिजिटल वेरीफाइबल क्रेडेंशियल के केस में ये ऐसे होगा कि ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में वो एजेंट्स एरीज ने कोड किया हुआ है, ऑटोमेटिकली 4 साल बाद मेरा जो वेरीफाइबल क्रेडेंशियल है वो जो मैं प्रूफ करने जाऊंगा लेके किसी के पास, without even talking to the issuer, the traffic authorities, that the credential will be like completely revoked, or I cannot tamper with that, like I told earlier. Or all of this is stored like on the ledger, like public DIDs, schemas, credential definitions, and revocation registries. और जहां तक बात आती है आपके पर्सनल कम्युनिकेशंस, आपके वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स, आपके प्राइवेट DIDs, और भी any kind of your personal data, it goes in your wallets, which means आपका जितना भी पर्सनल डेटा वो आपके पास आपके अपने स्टोरेज में होगा या किसी क्लाउड स्टोरेज में होगा आपकी सर्विस ने जो प्रोवाइड किया, based on the governance model. So when I talked about earlier giving control back to the user for digital identity using self-sovereign identity, this is what I meant. कि गवर्नेंस मॉडल वो मैनेज कर रहे हैं लेकिन डेटा का कंट्रोल आपके पास वापस आ रहा है. This is something like I said earlier, we might talk about in future more. We might do another webinar about agents. So you can think of it like when I say that ये जो agent softwares हैं ये आपके verifiable credentials hold कर सकते हैं wallet की सूरत में. So they could be edge devices like mobile phones, they could be tablets, they could be cloud servers, they could be computers, they could be any device, they could be an IoT device even. और उनके different uses हैं, like you can use them as routing agents. हाँ, one important concept that is enterprise agents. जब कोई organization credentials issue करती है, let's say यूनिवर्सिटी या आपका एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट, तो वो जिस एजेंट के थ्रू करेंगे उसे एंटरप्राइज एजेंट कहते हैं. और आप एज अ नॉर्मल कंज्यूमर जो उस क्रेडेंशियल को होल्ड करते हैं और बाद में प्रूव करते हैं किसी के पास, आप एक पर्सनल स्लैश एज एजेंट यूज करते हैं. Alrighty. Any questions regarding Aries, Ursa, or Indy? Okay, so moving forward, I guess we are almost in the end. Yeah, we have some time. So
Now let's talk about the opportunities it can build for your organization, for your business, or for the private or public sector. So there are, right now, it totally depends, drilled down to your imagination, what you can build with it. So keep the idea of identity and verifiable credentials in your head, or in other words, पाकिस्तान में पेपर बेस्ड सोल्यूशन जितने भी हैं जिनमें आपको अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिटी प्रूफ करनी होती है यूजिंग सम पेपर या फिर इन पर्सन, all of them can be done digitally. So when it comes to the use cases, that totally depends on your imagination, but there are some that I have like pinned down, like we'll talk about them. Second. Yeah, authentication and authorization. For example, signing documents. आप एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, आपको बंदा चाहिए ऑन द स्पॉट. राइट नाउ इमेजिन कोविड-19 इशू चल रहा है, आप बंदों को नहीं मिल सकते, आपने लीगल इश्यूज साइन कराने हैं. या लेट्स से आपके पार्टनर्स जो हैं वो कराची में हैं और आपने आपके एक फर्म कराची में और आपकी एक फर्म लाहौर में. आप लाहौर से कराची डॉक्यूमेंट्स बार बार पोस्ट नहीं कर सकते. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क. और आपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो सिग्नेचर लेने हैं, यू नीड टू वैलिडेट देम. हाउ डू यू डू दैट? यूजिंग सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, वो एक लॉयर है जो पंजाब में अपनी लॉ प्रैक्टिस कर रहा है. नाउ ही हैज टू गो टू अनदर प्रोविंस और वहां पे उसने अपने लॉ प्रैक्टिस करना है, लेकिन वहां पर तो लीगल सिस्टम ही डिफरेंट ज्यूरिस्डिक्शन में आता है. सो द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कैन इशू अ वेरीफाइबल क्रेडेंशियल टू दैट लॉयर. दैट इज, और वो अपना वो क्रेडेंशियल दूसरी स्टेट में जाके प्रूव कर सकता है और लॉ प्रैक्टिस कर सकता है. Can happen seamlessly. Same goes for doctors, accountants, real estate agents, trade people, a lot. एक छोटी सी एग्जांपल, ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस जो सिस्टम है उनका, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया नेम ट्रू आईडी, which actually does is के वो मेडिकल प्रोफेशनल्स को क्रेडेंशियल इशू करता है और जो कि पेपर बेस्ड प्रोसेस को मिनट्स लाइक दिनों मंथ्स से मिनट्स पे मूव कर रहा है. तो इट्स लाइक कोई भी डॉक्टर आया है वो 1 मिनट में ऑन बोर्ड हो जाता है टू प्रैक्टिस एंड स्टार्ट सर्विंग पीपल, बिकॉज आपने उसकी डिग्री वेरीफाई करनी है, आपने ये देखना है कि इसका जो लाइसेंस है ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस वो वैलिड है, एंड इसका प्रीवियस जो रिकॉर्ड है, हाउ इज दैट. सो ऑल ऑफ दैट दे आर मैनेजिंग दैट यूजिंग सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी. सो authentication and authorization, that's one case. Then in-person verification. For example, ride-hailing services. I was talking with one of a close friend about it. पाकिस्तान में उबर और करीम के काफी सिक्योरिटी केसेस होते हैं. इमेजिन उबर पे एक ड्राइवर कोई गलत हरकत करता है एंड उबर बैन्स इट, बट करीम पे वही ड्राइवर ड्राइव कर रहा है. देयर इज नो इंटरकनेक्शन ऑफ दीज टू सर्विसेज. यू कैन से कि हाँ वो दोनों आपस में मर्जर कर रहे हैं तो दे कैन राइट अ इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर. बट इमेजिन कि अगर कल को और राइड सर्विसेज आती हैं, 2-3 और आ जाती हैं, एयरलिफ्ट आ गई और 2 आ जाती हैं, हाउ लाइक आप n नंबर ऑफ राइड हेलिंग सर्विसेज को n नंबर ऑफ राइड हेलिंग सर्विसेज इंटीग्रेट नहीं कर सकते. सो इट्स लाइक इंटीग्रेटिंग एवरी अदर सॉफ्टवेयर विद ईच अदर. इतने कॉस्ट और इतने रिसोर्सेज किसी के पास भी नहीं है. वेरिफिकेशन ऑफ मेडिकल स्टोर कि ये मेडिकल स्टोर लेजिट है. वेरिफिकेशन ऑफ अ मेडिसिन कि ये मेडिसिन लेजिट है, ये ओरिजिनल है कि नहीं है. वेरिफिकेशन ऑफ एन अटेस्टेशन, पेपर अटेस्ट होते हैं, लॉ बेस्ड अटेस्टेशंस, एनीथिंग. प्रूफ ऑफ ओनिंग अ बिजनेस, आप इस कंपनी के ओनर हैं कि नहीं. राइट नाउ योर एनटीएन नंबर इज द ओनली थिंग जो कि हार्डली प्रूवेबल है. तो इंटरनेट पे जो भी बिजनेसेस हैं, इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू ट्रस्ट देम कि आप जब उनके ऑनलाइन पोर्टल में अपना कार्ड नंबर डाल रहे हैं, so what's going to happen next? There is technically no legit way of verifying some businesses. Proof of training, HSC can issue verifiable degrees to people जो कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी वेरीफाई हो सकती हैं. अभी I remember when I moved to Finland, मैं HSC की लाइन में लगा, 6 घंटे बाद मेरी बारी आई, मेरी डिग्रियां वो लेके कमरे में चले गए, उन्होंने 2 स्टैंपें लगाई उसके ऊपर, वो वापस लेके आए, मैंने उनको फोटोकॉपीज दी, उन्होंने फोटोकॉपीज पे भी स्टैंप्स लगाई और उन्होंने पैसे भी लिए, और बाद में वो स्टैंप्स फॉरेन मिनिस्ट्री वालों ने वेरीफाई की. इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड पेनफुल प्रोसेस फॉर मी एंड फॉर अदर पीपल.
here to verify कि वो actually में वो degree legit थी कि नहीं. I guess they at the end of the day they gave up. उन्होंने कहा कि ठीक है इसको ऐसे ही ले लेते हैं. Diploma verification, which means let's say Pakistan Blockchain Institute कोई diplomas issue करती है, they can do it over the blockchain, which means उसकी validity जो है, उसकी जो verification है, it can be done. आपकी Azure और Amazon की certifications can go verifiable digitally without having a central authority. Medical history, this is a project I'm currently working on here in Finland, जिसमें हम एक hospital के records दूसरे hospital के doctors के साथ share करना चाहते हैं using permission of patients. So patient इजाजत देता है कि यार मेरे बच्चे की diabetic जो history है वो उस hospital के उस doctor के साथ share कर दो. पाकिस्तान में I know some things are like bit difficult to implement, but sooner or later we have to move to a more welfare society. There are some questions. I'll look at them in a while. Let me just finish with this before demo. I'll take questions. Delegation of authority, which means power of attorney, making your stamp paper more legit. Right now अगर आपने एक stamp paper verify करना, I don't know how to do it, honestly. एक website होती है जिधर मैं जाके QR code scan करता तो या अपना paper scan करके उधर post करता तो it would have been more easier. Okay, decision making policy on behalf of something when it comes to business. Imagine आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं, आपने अपनी power of attorney किसी को देनी है. It talking about actual legit authentic business, like let's say in an enterprise grade, this could actually be a problem. Small scale businesses problem nahi hai ye wali, lekin on an enterprise grade it is actually a problem. All right, let's see, we have some questions. Okay. Okay, so if you talk about question ye hai ke how can one person start with digital identity? All right, so I would say if you want to learn, इस webinar के end पे मैंने 2 courses online जो हैं उनके links इस webinar के end की slide में add किए. You can take a look at those. Highly recommended. First course is all about intro, जिसकी base पे मैंने ये webinar design किया. Second is more about hands-on experience, Aries code and all that stuff. अगर आप technical person हैं, you should go with course number 1. अगर आप and then you don't need to go with the course number 2. अगर आप non-technical person हैं, then you need to go with course 1. Yes. अगर आप non-technical हैं, तो course 1. Yes, course 1. और अगर आप technical तो course 1 and 2 both. So coding course 2 में. So links will be in the last slide and you can see them over there. Besides that, are there any other questions regarding what could it mean for your organization? Okay, I guess we are in the end. We'll talk about, I'll show you a demo and that's pretty much it. All right. Okay, no, you don't need any blockchain experience, literally. अगर आपको code लिखना आता है, coding experience चाहिए सिर्फ, blockchain का कोई experience नहीं चाहिए. अगर आपका थोड़ा सा coding experience है, even basics, mean you can write, let's say JavaScript, if else for. आप course 1 लें, आपको concept समझ आएंगे, या ये सिर्फ इस webinar की base पे I believe अगर आप इसकी video दोबारा देख के course 2 पे jump कर सकते हैं सीधा. I think you will be happy enough for that. और साथ साथ on the go चीजें सीख लें. या तो आप course 1 लें proper और फिर course 2 लें. वो मैं आपको अभी link जो है मैं share कर देता हूँ. But like I said, all you will need, अगर आपने technically start करना है तो आपको सिर्फ coding experience चाहिए होगा. वो भी इतना कोई high level का नहीं. You just need to be good at writing basic level applications. So अगर आप university student हैं, you should be fine. Bachelor's 3rd, 4th semester. Yeah.
All right, let's do a demo. So मैं आपको walk through करता हूँ demo है क्या, and then we'll show you the self-sovereign identity in action, and I guess that would be all for today. So what I'm going to show you now is an application built by Everinum, एक कंपनी है यूएस की जिन्होंने सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी में बहुत काम किया। सॉवरेन में भी इनका काफी ज्यादा कोलैबोरेशन है। ये एक डिजिटल वॉलेट है iOS और एंड्रॉइड के लिए, यू कैन यूज इट एट होम एज वेल। So we will be using this and I'll be showing you what you can do with it. So scenario कुछ ऐसा है कि एक बंदा है जिसने फैबर कॉलेज से डिग्री की है, ठीक है, और उसकी कॉलेज ने उसे एक वेरीफाइबल क्रेडेंशियल दिया है उस डिग्री का, जो कि उसके वॉलेट में आएगा, और वॉलेट बेसिकली इस कनेक्ट मी ऐप में स्टोर होगा। तो वो वेरीफाइबल क्रेडेंशियल उसकी वॉलेट में आएगा और वो उसे होल्ड करेगा। सो इशूअर फैबर कॉलेज है, होल्डर मैं हूं, और उसके बाद मैं डिग्री करने के बाद फैबर कॉलेज से मैं कहता हूं मैंने जॉब करनी है, तो मैं एक्मे कॉर्पोरेशन में जॉब अप्लाई करता हूं। तो वो वेरीफाई करना चाहते हैं कि मेरी डिग्री वैलिड है कि नहीं। तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू फैबर कॉलेज, मैं उन्हें अपनी डिग्री का वेरीफाइबल प्रूफ भेजूंगा जो वो बगैर फैबर कॉलेज से बात किए वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके बाद मैं कहता हूं कि मैंने घर लेना है या गाड़ी लेनी है और मुझे बैंक से लोन चाहिए। सो इन ऑर्डर टू गेट माई लोन, बैंक चाहता है, थ्राइफ्ट बैंक चाहता है कि मैं ये प्रूफ करूं कि मेरे पास जॉब है। तो एक्मे कॉर्पोरेशन मुझे एक वेरीफाइबल क्रेडेंशियल इशू करेगी जो कि मेरे वॉलेट में जाएगा, लाइक आई सेड कनेक्ट मी ऐप में, जो कि ये प्रूफ कर सकता है कि मेरे पास जॉब है, और फिर थ्राइफ्ट बैंक मुझे उस बेस पे लोन इशू कर सकता है। वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑल ऑफ दिस जस्ट कीप इन माइंड, इसमें ट्रेडिशनल आइडेंटिटी बिल्कुल यूज नहीं हो रही। इट विल लुक लाइक कि ये तो बिल्कुल रिलेशनल डेटाबेसेस या जैसा बेसिक एक आइडेंटिटी सिस्टम होता है, ये वैसा है, बिकॉज इट इज डिजाइन्ड इन दैट वे कि यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन एट द बैक देयर इज ब्लॉकचेन and it's going to do a lot of cool things for you. So I'm going to wait a second, I'm going to share my screen again, whole screen, and show you a demo. Okay, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो, कोई जवाब दे सकता है मुझे? जी नजर आ रही है सर। ठीक हो गया जी। ओके, एक सेकंड, मैसेज भी आ रहे हैं। हाँ ठीक है। ओके, सो लेट मी जस्ट गेट दिस स्टार्टेड। ओके, ये मेरा फोन है, दिस इज राइट नाउ कनेक्टेड टू माय कंप्यूटर। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। श्योर आ रही है। ठीक हो गया। हाँ जी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी को शायद मेरी आवाज ना आए। एक सेकंड, मेरे ना एयरपोर्ट्स की बैटरी लो होगी ना। ओके, ऑलराइट, so let me just quickly find connect me app. Sorry for any messages. Alright, so ये ऐप है, मैं दोबारा खोलता हूँ। ये ऐप है कनेक्ट मी, जो कि मैंने डाउनलोड किया iOS स्टोर से, और when I open this is the interface, और लेफ्ट साइड पे आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है, इसमें स्टेप 1 मैं कनेक्शन बनाऊंगा फैबर कॉलेज के साथ, और फैबर कॉलेज से मैंने डिग्री कर ली हुई है। तो व्हाट दे विल डू इज वो मुझे एक डिजिटल वेरीफाइबल क्रेडेंशियल इशू करेंगे जो मैं अपने पास होल्ड करूंगा। फिर मैं उसे एक्मे कॉर्पोरेशन को प्रूफ करूंगा और वो मुझे जॉब देंगे। फिर मुझे बैंक से लोन चाहिए, तो मुझे एक्मे कॉर्पोरेशन से एक क्रेडेंशियल चाहिए होगा तो मैं प्रूफ कर सके कि मेरे पास जॉब है। विल गो थ्रू द 3 स्टेप्स वन बाय वन। सो स्टार्टिंग, ये एक डमी वेबसाइट है कॉलेज की। मैंने डिग्री कर ली है। आई वांट टू कनेक्ट विद सॉवरेन डिजिटल वॉलेट। ये मैंने क्लिक किया, ये क्यूआर कोड मेरे सामने आ गया। ऐप से मैंने
कैमरा ऑन किया और स्क्रीन पे स्कैन किया, तो इसने मुझे कहा कि मेक अ कनेक्शन विद फैब्रिक कॉलेज। क्वेश्चंस अभी लेते हैं, मुझे एक बार डेमो करने दें, देन विल टॉक मोर अबाउट मोर क्वेश्चंस। ओके, सो मैंने फैब्रिक कॉलेज के थ्रू एक कनेक्शन बनाया और मैंने ये अपने कॉलेज के साथ मैंने कनेक्शन क्रिएट कर लिया। अभी आपने रियलाइज किया कि इसने मेरा फेस स्कैन किया, इट्स टू वेरीफाई कि मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूं कि नहीं। ऑलराइट, सो ये मेरा कनेक्शन आ गया और यहाँ पे मुझे आ गया कि मेरा कनेक्शन क्रिएट हो गया। ऑलराइट, सो कंटिन्यूइंग ऑन द वेबसाइट, मैंने उन्हें कहा कि मुझे मेरी डिग्री का क्रेडेंशियल सेंड कर दें। ये देखें, मेरे पास इधर एक नोटिफिकेशन आया, सेकंड किधर गया, हाँ ये रहा, न्यू क्रेडेंशियल ऑफर डेमो ट्रांसक्रिप्ट। इस ट्रांसक्रिप्ट के अंदर है कि मेरा CGPA 4 है, मेरी कंप्यूटर साइंस की डिग्री थी और मैंने सब सॉफ्टवेयर आइडेंटिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री की है जी। एक्सेप्ट, ये क्रेडेंशियल मुझे ऑफर आई है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो बेसिकली फैब्रिक कॉलेज ने मुझे ऑफर भेजी कि ये डिग्री का क्रेडेंशियल हम तुम्हें भेज रहे हैं, डू यू एक्सेप्ट इट। ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया और अब ये क्रेडेंशियल मेरे पास सेव हो गया मेरे वॉलेट में। अब मैं कर ये सकता हूँ कि मेरे पास ये वॉलेट में सेव है, मैं दुनिया में किसी को भी ये प्रूव कर सकता हूँ कि मेरे पास डिग्री है। और सिर्फ यही नहीं, मैं जीरो नॉलेज प्रूफ यूज करके ये प्रूव कर सकता हूँ कि मेरा CGPA सिर्फ 4 था और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं उसको दूं ही ना, या मैं सिर्फ उसको ये इन्फॉर्मेशन दूं कि मैंने डिग्री की हुई है, हाँ कि ना, और मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर ना करूं। सो मूविंग फॉरवर्ड, स्टेप 2, डिग्री कर ली, क्रेडेंशियल आ गया। स्टेप 2, जॉब अप्लाई करनी है। एक्मे कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे आया, उन्होंने कहा जी जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की इंजीनियर की जॉब आई हुई है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है। और मैं कहता हूँ जी मैंने अप्लाई करना है यूजिंग माई डिजिटल वॉलेट। उन्होंने QR कोड जनरेट किया मेरे लिए, आई होप हो गया। मैंने यहाँ से ऐप में से स्कैन दबाया, स्कैन किया और इसने कहा कनेक्ट करो एक्मे कॉर्पोरेशन के साथ। ये मैंने कनेक्ट किया, इसने मेरा फेस वेरीफाई किया, इट मीन्स आई एक्सेप्ट। अगर आपका फ़ोन पासवर्ड वाला या थंब प्रिंट होगा, इट विल आस्क फॉर थंब प्रिंट और पासवर्ड। और मेरे पास ये कनेक्शन बन गया। सो यू सी, आपके साथ कोई भी ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकता, यू डिसाइड हु यू कनेक्ट विद। मैंने ओके दबाया उस साइड से, तो उसने मुझे यहाँ पर कहा कि जॉब अप्लाई करने के लिए आपको स्टूडेंट नेम, कॉलेज का नाम, डिग्री, आपका मेजर किस में था और GPA की इंफॉर्मेशन चाहिए, वैलिड इंफॉर्मेशन। तो हमने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, वो एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पर ऐप में मुझे आई है कि मुझसे ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन उन्होंने रिक्वेस्ट की है और मेरे क्रेडेंशियल से ऑटोमेटिकली ये जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो उसने पिक कर ली है वॉलेट ने, और वो कह रहा है कि ये मैं एक्मे कॉर्पोरेशन को भेज दूं। मैं कहता हूँ सेंड, और ऑटोमेटिकली इट शुड फिल माय इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट। ये आ गई था मेरी सारी इंफॉर्मेशन। मैंने एक कीबोर्ड से एक लफ्ज भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ एक QR कोड स्कैन किया और जो फैबर कॉलेज ने मुझे डिग्री का क्रेडेंशियल इशू किया था उसकी बेस पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल हो गई है। एंड यू कैन सी मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, ये दिस इज वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन। अब इसका जो गवर्नेंस मॉडल है कि ये इंप्लीमेंट कितनी ऑथेंटिकली हो रही है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन जिसने SSI डिप्लॉय किया, जिसने इंप्लीमेंट किया। जैसे कि एक्मे कॉर्पोरेशन का एक गवर्नेंस मॉडल है, फैबर कॉलेज का एक अपना गवर्नेंस मॉडल है। Oh, sorry. All right. Coming back here. Okay. अब बेसिकली ये जॉब अप्लाई करने लगा हूँ मैं। ओके जी, एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। एप्लीकेशन का स्टेटस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई हैव बीन हायर्ड, सो आई एम स्टार्टिंग ऑन मंडे, लेट्स रिसीव अ वेरिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो मुझे एक वेरीफाइबल क्रेडेंशियल इशू होगा जो ये प्रूफ देगा मुझे कि मैं इस कंपनी एक्मे कॉर्पोरेशन में जॉब करता हूँ एज अ जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर।
ये मैंने इसे क्लिक किया, आई एम वेटिंग फॉर माय ऐप टू रिएक्ट फॉर दैट। मुझे नोटिफिकेशन आया, मैंने नोटिफिकेशन पे क्लिक किया और ये देखें क्रेडेंशियल में इंफॉर्मेशन है, मेरा एड्रेस, अपार्टमेंट नंबर, व्हाट नॉट, इंफॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, सोशल सिक्योरिटी नंबर, CNIC, ब्ला ब्ला ब्ला। ये मेरी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन है कि मेरा उनके पास जो मेरी इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन से उन्होंने एक क्रेडेंशियल बनाया यूजिंग अ क्रेडेंशियल स्कीमा व्हिच वी लाइटली टच्ड, और उसकी बेस पे उन्होंने मुझे ये क्रेडेंशियल भेजा। मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, वो शायद आपको ये एक मिनट एक्सेप्ट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इट्स राइट नाउ सर्कलिंग हियर। ओके जी, क्रेडेंशियल एक्सेप्ट हो गया। इसके 16 एट्रीब्यूट्स हैं। इफ यू सी, इसकी एक एक्सपायरी डेट है, actually maybe not, yeah, but technically you can build a credential with an expiry date as well. Okay, so coming back to actual thing, मेरे पास डिग्री का क्रेडेंशियल है कि मैंने डिग्री की है फैब्रिक कॉलेज से, और मेरे पास एक्मे कॉर्पोरेशन का एक क्रेडेंशियल है कि मैं एक्मे कॉर्पोरेशन में जॉब करता हूँ एज अ जूनियर डेवलपर। नाउ अब मैं कहता हूँ मैंने बैंक से लोन लेना है गाड़ी के लिए। मैं बैंक की वेबसाइट पे जाता हूँ, बैंक कहता है ये सारी इंफॉर्मेशन भरो, नाम, ईमेल एड्रेस, सिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, और दे नीड टू वेरीफाई इट। वो इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे। अब एक्चुअल लाइफ में लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, आई बिलीव सम ऑफ यू माइट नो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और उसमें ऑथेंटिकेशन की कितनी और डेटा वेरिफिकेशन की कितनी रिक्वायरमेंट। खैर, मैं कहता हूँ कि मैं अपने डिजिटल वॉलेट से बैंक का लोन अप्लाई करना चाहता हूँ। हाँ, ओके, सो इट विल से मी कि आई नीड टू स्कैन अ QR कोड। मैंने QR कोड स्कैन किया, इसने कहा यू नीड टू कनेक्ट विद थ्राइव्ड बैंक, कंटिन्यू, स्कैन, ऑलराइट। सो ये आ गया बैंक का कनेक्शन। नाउ आई वांट बैंक टू इशू मी अ लोन। बैंक ने कहा ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अब ये इंफॉर्मेशन मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुंह उठा के इंफॉर्मेशन यूज करनी शुरू कर दे। सो द बैंक इज गोना आस्क मी कि हमें आपकी इंफॉर्मेशन यूज करनी है, कैन वी यूज इट। मुझे रिक्वेस्ट आई है यहाँ पर, आई क्लिक व्यू ऑन द रिक्वेस्ट, ये इंफॉर्मेशन वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने उनके इंफॉर्मेशन नहीं देनी, मैं अभी भी इसे इग्नोर कर सकता हूँ यहाँ से। बट लेट्स से आई वांट टू मूव ऑन, तो प्रेस सेंड। There you go, आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्री फिल्ड आ रही है, जो आपको अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन मल्टीपल क्रेडेंशियल से फिल होके आ रही है। आई बिलीव यू कुड एक्चुअली डू दैट। आप मल्टीपल क्रेडेंशियल्स की बेस पे डेटा वेरीफाई कर सकते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन जो आपने बिल्ड किया। Here you are, congratulations, we have received all your information and your loan is approved. So this is how it goes, the SSI in action. I guess that's the end of the demo. And talking about the last thing is, let's take some questions. Actually, there was something in the questions. Where is it? Just like a verified trust the issuer certificate. Can you explain it, Bilal? कि exactly question क्या आपका? Hello. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा भी एक सलाम। क्वेश्चन है। जी बिलाल। नहीं, मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ। ओह जी मुदस्सिर। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने सारा एक्सप्लेन किया डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटीज़ का, तो अब मसला ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटीज़ वहीं पे जो है वो सक्सेसफुल है जहाँ पे मॉडल्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी, किसी फर्म में वो जी मॉडल्स जी अवेलेबल हैं जो मेरे डिसेंट्रलाइज्ड क्रेडेंशियल्स जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी। अदरवाइज अगर मैं किसी और कंपनी, किसी और फर्म में अपना डेटा लेके जाता हूँ जो इन मॉडल्स को सपोर्ट नहीं करते, तो वहाँ पे तो जी जी डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटीज़ बिल्कुल फेल हो जाती हैं। तो एग्जैक्टली। इस चीज़ को कैसे हम क्या कहते हैं फेस इस देखिए, प्रॉब्लम को किस तरीके से एड्रेस करें? थैंक यू। आपने अपना नाम क्या बताया? अहमद मुदस्सिर अली। मुदस्सिर अली। मुदस्सिर भाई देखें,
this is an ongoing work right now. लोग आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ मूव हो रहे हैं और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान में इस तरफ मूव हों। एंड आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट ही नहीं करी सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी तो हम उससे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस, दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट। मैंने इस बारे में, मैं पिछले 3-4 साल से सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी में काम कर रहा हूँ और आई रियलाइज्ड कि देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन इन पाकिस्तान। सो मैंने ट्रस्टनेट पाकिस्तान फाउंडेशन स्टार्ट की है, which will actually help organizations, public private sector, to engage in cross industry proof of concepts and implement like use cases, research, anything. I am at your service and my organization is at your service. So the idea behind TrustNet Pakistan is okay, we are going to try to build a digital trust consortium in which it will be revolving around self-sovereign identity, which means जो organizations believe करती हैं कि self-sovereign identity is the future of digital identity, वो हमें join करें, and then we will together build and shape the digital identity for different cross-industry solutions. And for that, I wanted to keep it open source and free. So हमारी GitHub repo भी है, you can go and check it out. I've pushed some code and there are other people probably. And if you want to contribute, if you're interested, आप join करना चाहते हैं इस initiative को, we will be very welcoming. We want people to join in TrustNet Pakistan. There are multiple roles. आप अगर developer हैं, architect हैं, तो you can jump in as a contributor of SSI. आप सीख सकते हैं SSI के बारे में, self-sovereign identity के बारे में। और अगर आप visionary हैं, अगर आप business person हैं, you can join as a trustee. आप हमें इसको डिज़ाइन करने में, पाकिस्तान की मार्केट को पेनिट्रेट करने में हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और या ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, देन यू कैन जॉइन अ कंसोर्शियम जिसमें आप क्रॉस इंडस्ट्री सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप डिफरेंट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड वी विल हेल्प यू आउट विद दैट। एंड बाय फॉर दैट यू कैन जॉइन आवर स्लैक कम्युनिटी or write us an email or anything, or just connect with me directly or with Ahmed bhai, because he's helping me out through all of this, and I'm really grateful for him for that. So do check it out. Check out our website at trustnet.net.pk and our GitHub, and maybe talk to us. Is there anything else? So मुझे ये पूछना था कि जो एरीज का आपने बताया, हाइपरलेजर एरीज का, उसकी जो लैंग्वेज है वो ज़्यादातर किस में, मतलब उसकी कोडिंग है, देखें गो में है या जावास्क्रिप्ट पे, सी पे, किस पे, ये पूछना था मुझे। एरीज अभी करंटली अंडर डेवलपमेंट है। मैं और मेरी टीम इस वक्त काम कर रहे हैं एरीज के ऊपर, और लेकिन एरीज थोड़ा सा नया है तो हम इंडी पे ज़्यादा काम कर रहे हैं इस वक्त, डायरेक्टली लेजर के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। तो एरीज का ये है कि एरीज मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, जैसे गो, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट नेटिव, देन देयर इज पाइथन। जो पाइथन है इस वक्त वो डेवलप प्रोजेक्ट है। सो किसी के माइक से आवाज आ रही है अजान की, खामोश हो जाते हैं थोड़ी देर कहते हैं तो। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली इधर अजान नहीं हो रही। खैर, maybe you guys can listen. So like I said, there is Go language, Python, JavaScript, maybe mainly 3 of these. और जो इसमें से Python है वो mostly developed है, लेकिन future Go का है। So I will suggest, अगर आप tech में हैं, आप solutions adopt करना चाह रहे हैं, go with either JavaScript or either with Python. Go को अभी थोड़ी देर साइड पे रख लें, let it cook up. Even my team is waiting right now कि थोड़ा टाइम वो काम और कर लें उस पे, then we can do it. There's a question here. What is Nadra or any other organization give you digital connection after sending them, they throw away or delete
from the database, revoke it. So is there any way it works? Isn't it make it centralized network? देखें, it has to be on ethic grounds. अगर आपको वो credential issue करते हैं और उन्होंने उसको issue करते हुए उसमें revocation की availability ही नहीं डाली, तो वो उसको revoke नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपको वो credential issue कर रहे हैं और उसको 5 साल की validity है, let's say आपके शनाख्ती कार्ड की भी एक literal validity है, maybe 10 साल 15 साल, तो वो 10 साल का revocation डाल के उसमें डाल देते हैं. या let's say आप कोई भी बंदा किसी भी टाइम, ये आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इट्स लाइक जो इशूअर है दैट हैज द एबिलिटी टू ऑफ कोर्स रिवोक योर क्रेडेंशियल, बट in a good self-sovereign ecosystem, it is based on ethical identity providers. So अगर आप कहते हैं कि कोई बंदा आपके साथ बुरी करना चाहता है और आपके क्रेडेंशियल्स रिवोक करना चाहता है, तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो कोई भी नहीं रोक सकता. तो उस लिहाज से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा सर, ये मेरा ही सवाल था, लेकिन बेसिकली हम डिसेंट्रलाइज पे अगर बात करते हैं तो एवरीथिंग इज डिसेंट्रलाइज, नो वन कैन चेंज इट एंड नो वन कैन रिवोक इट. पर अगर आप माजरा पे आते हैं और कोई भी यूनिवर्सिटी पे आते हैं, अगर बेसिकली हम काम अगर डिसेंट्रलाइज का कह के कहते हैं कि जी दिस इज डिसेंट्रलाइज, बट अगर नादरा या कोई भी, जिसका मेरा सवाल है, जिसका नादरा कोई भी अपना डेटाबेस से हमारा नाम ही अगर खत्म कर देता है, तो ये क्या बेसिकली ये तो सेंट्रलाइज हो गया ना? देखिए तो आप अभी जो बात कर रहे हैं ना, वो डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी के कोर में जाती है. मेरा करंट जो फोकस है वो इस चीज पे नहीं है कि व्हाट वुड हैपन इफ समबडी वुड टेक अवे योर आइडेंटिटी, क्योंकि दैट्स लीस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स राइट नाउ. मेरा पॉइंट ये है कि आइडेंटिटी शुड बी इंटरऑपरेबल एंड कंपैटिबल. अभी इस टाइम आपका जो नादरा की जो आइडेंटिटी है डिजिटल, इट्स कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड. आप अपनी नादरा की आइडेंटिटी बहुत मुश्किल से कहीं इस्तेमाल करते हैं, वो कार्ड दिखा के इस्तेमाल होती है जहां भी होती है. उसके अलावा कोई तरीका नहीं कि डिजिटली आप वेरीफाई कर सकें विदाउट, अगर आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड नहीं है ना, तो देयर इज नो वे यू कैन प्रूव कि आप पाकिस्तानी सिटीजन है. पाकिस्तान के साइड जी एग्जैक्टली, देयर इज नो वे. अपना घर का एड्रेस नहीं प्रूव कर सकते आप. लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड पे चीजें चेंज करानी होती है, कहते हैं घर के बिल लेकर आए, क्योंकि इवेंचुअली जैसे मैंने कहा आइडेंटिफायर्स क्रिएट करते हैं. आप बैंक में जाके शनाख्ती कार्ड देते हैं तो वो आपका बैंक अकाउंट खोलते हैं, फिर उस बैंक अकाउंट के आइडेंटिफायर से आप कुछ और कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास एक और शनाख्त है कि आपका बैंक अकाउंट भी एग्जिस्ट करता है. बैंक आपकी गवाही देगा कि इस बंदे का हमारे पास बैंक अकाउंट है. सो आपका सवाल लेजिट है कि अगर कोई बंदा आपकी आइडेंटिटी लेना चाहता है, मतलब कि वो रिवोक कर देता है, तो आप क्या कर सकते हैं. दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कितना डिसेंट्रलाइज सिस्टम है. अब इवेंचुअली अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे बात करें तो वो प्राइवेट नेटवर्क होगा. अगर मैं उसकी इंप्लीमेंटेशन पे भी बात करूं तो ठीक है, वो एक प्राइवेट नेटवर्क होगा जो कि गवर्नमेंट ही रन कर रही है. ठीक है, हाँ जी. लेकिन अगर आप बात करते हैं, अगर एक परफेक्ट वर्ल्ड की बात करें, तो उसमें दुनिया की सारी डिजिटल आइडेंटिटीज जो हैं वो डिफरेंट लेजर्स कनेक्टेड होंगे. ओके, इमेजिन करें पाकिस्तान, श्रीलंका, रशिया, यूएस, सबके अपनी अपनी डिजिटल आइडेंटिटीज हैं और ये सारी की सारे नेटवर्क में कनेक्टेड है. ओके, इन दैट केस इन दैट केस आपकी आइडेंटिटी जो है आप यूएस में भी जाके प्रूव कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन revocation of that identity issuer के हाथ में है. and like I said it's all about कि कितने ethical issuers हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम अदनान है. जी मैं इस सवाल पे कमेंट करना चाहूँगा भाई के जी कि और इसको आप अगर क्लैरिफाई कर दे, अगर ऐसा मुमकिन है, ऐसा पॉसिबल है इसमें ब्लॉकचेन में, क्योंकि अगर किसी इंस्टीट्यूट ने अगर आपको एक बार आइडेंटिटी जनरेट की है और वो बाद में रिवोक करता है, तो उसकी हिस्ट्री तो होगी ना आपके पास. हाँ, आपके पास उसका प्रीवियस रिकॉर्ड तो होगा कि आपके पास और वो रिवोक हो गई. ये चीज बेसिकली इस चीज को किसी हद तक कवर तो कर सकती है. जी बिल्कुल. तो आप इसको प्रूव तो कर सकते हैं कि पहले कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने एक आइडेंटिटी इश्यू तो की थी, और अगर वो फिर बेसिकली एक एथिकल डिबेट है
Exactly. It's exactly like that. Thank you, Adnan. All right. अगर और सवाल नहीं है तो what I would like to say is the takeaways कि आप आज अगर यहाँ से जा रहे हैं तो आप क्या लेके जा सकते हैं साथ. So keep in mind कि digital verifiable credentials जो हैं अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है. और जितना भी डेटा आप कलेक्ट करते हैं अपने वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स का जो आपको इशू होते हैं वो आपके कंट्रोल में होता है. जिस तरह मैंने आपको अभी डेमो में दिखाया कि कैसे आप उसको शेयर कर सकते हैं अपनी मर्जी के तहत. लेकिन ऑफ कोर्स गवर्नेंस मॉडल इशूइंग पार्टी का होता है. और द ब्यूटी ऑफ द होल सोल्यूशन ऑफ सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी इज इट्स ओपन सोर्स एंड you always remain sovereign, which means आप आज़ाद हैं कि आप किसी भी डिजिटल वॉलेट या ऐप पर रिलाई नहीं कर रहे. आपका जब दिल किया आपने अपना सारा डेटा उठाया और आप एक सर्विस से दूसरी सर्विस पे मूव कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि इमेजिन करें आपके पास जीमेल का अकाउंट है. आप कहते हैं मैंने जीमेल की ईमेल सर्विस यूज़ नहीं करनी. अब अपनी सारी ईमेल, सारे कॉन्टैक्ट, सब कुछ लें, उसको उठाएं और हॉटमेल में डाल दें. और अब आप हॉटमेल यूज़ कर रहे हैं, उसको उठा के अब याहू में डाल दें. आप कभी भी अपना जो सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अंडरलाइनिंग अथॉरिटी उसकी डेटे की वो आपके पास है. सो दैट मेक्स इट completely self-sovereign. So in the end, I would like to just say, okay, welcome to the world of self-sovereign identity, and I hope you got something fruitful out of this today. And अगर आप और जानना चाहते हैं या from business perspective or from technical perspective, we will send you a questionnaire for feedback. आप उसे फिल कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपके लिए और webinars या फिर let's say workshops or training sessions, something like that, or maybe a business oriented session जिसमें हम actual में पाकिस्तानी based SSI solutions की बात करें, वो हम organize कर सकते हैं using TrustNet Pakistan. And at the end, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि कुछ additional material है, जैसे edX का एक कोर्स है Linux Foundation का, which is based on Indy's, Aries and Ursa and self-sovereign identity principles. So I highly recommend it. अगर आप technical हैं या non-technical हैं, you can easily look into the content and learn more about it, make new business opportunities, and maybe learn what are the concepts of SSI. और फिर अगर आप technically in depth जाना चाहते हैं कि how to develop these blockchain identity solutions, तो edX का ये जो course है, this is launched last month, I believe. Aries developer, Hyperledger Aries developer, ये कर सकते हैं. They both मैंने दोनों किए हैं. They are very interesting, and I recommend them. और ये दोनों free हैं, so there is no cost on that. हाँ, in case you want a certificate, that's around $100-ish or something. Besides that, there are other webinars, self-sovereign identity पे और introduction of self-sovereign identity पे, जो आप देख सकते हैं, वो मैंने include किए हैं. एक white paper है जो बताता है कि इसकी ज़रूरत ही क्यों है. Basically, this was the initial white paper written by Sovereign in 2006. और फिर Dumond Reed, जिन्होंने basically term coin की है self-sovereign identity की, उनकी एक talk है very interesting about trust over IP, कि किस तरह इंटरनेट पे जो मिसिंग लेयर है उसको, उस वॉइड को फिल करने के लिए ये टेक्नोलॉजीज हेल्प कर रही हैं. और तो आई रिकमेंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, go through that. And by the very end, thank you very much for joining us today. और अगर कोई सवाल है तो you can always ask me directly by emailing me, और आप मुझे LinkedIn पर ऐड कर सकते हैं. और if you want to reach me via TrustNet, अगर आप, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आप मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में हम डिजिटल आइडेंटिटी और सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी का इनिशिएटिव फॉरवर्ड पुश करें. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई जस्ट रिमेंबर्ड, कोविड-19 से रिलेटेड डिजिटल आइडेंटिटी की बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है
that we are actually thinking of working here in Finland, and I think Pakistan में भी उसका अच्छा scope हो सकता है. I'll share it with you guys. That is, imagine इंशाल्लाह पाकिस्तान में कोविड-19 पे काबू आएगा और एक वैक्सीनेशन बनेगी, और फिर वैक्सीनेशन जो है वो लोगों को लगनी शुरू होगी, and people will be healthy again. But how would you prove कि ये बंदा वैक्सीनेटेड है, इसको ट्रैवल अलाउ है, या इसको इस सिटी से उस सिटी में जाना अलाउड है, इसको ऑफिस आना अलाउड है? सो अगर हम वैक्सीनेशंस का वेरीफाइबल क्रेडेंशियल क्रिएट करते हैं तो इट कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन, बिकॉज इतने वेंडर्स हैं पाकिस्तान में जो कि वैक्सीनेशंस लगाएंगे. करियाने की दुकान के साथ वाला जो मेडिकल स्टोर है या जो वो डॉक्टर है वो भी वैक्सीनेशन लगाएगा. तो दे कुड इशू फ्रॉम देयर फोन वेरीफाइबल क्रेडेंशियल. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट रेगुलेशन के थ्रू ही ये पॉसिबल है. तो कोई भी डॉक्टर पाकिस्तान में कहीं भी वैक्सीनेट करता है किसी को, तो वो उनको एक वेरीफाइबल क्रेडेंशियल इशू कर देगा, और वो वेरीफाइबल क्रेडेंशियल जो है वो प्रूफ करेगा कि वो बंदा वैक्सीनेटेड है. और दिस इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग केस दैट वी आर लुकिंग इनटू, एंड मे बी some of you might be interested. Oops. I think I have a message here. हाँ, इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो बेसिकली अहमद भाई जो हैं वो आई बिलीव वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज रीच देम आउट फॉर दैट. उसके लिए आप उमर भाई रिकॉर्डिंग हो रही है सबके लिए, ठीक है, वो सब हम शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह सबके साथ, ठीक है. उमर भाई थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल सेशन. आई होप सबने बहुत सीखा होगा इससे, ठीक है. और सबके लिए एक छोटी सी बात जो मैं और उमर भाई डिस्कस कर रहे थे कि हम इसके ऊपर आने वाले दौर में कुछ दिनों में इंशाल्लाह दोबारा से वेबिनार भी लेके आएंगे, और ऑब्वियसली इसके ऊपर एक ट्रेनिंग भी लेके आएंगे सबके लिए, ठीक है. तो स्टे इन टच विद अस, ठीक है. एंड थैंक यू उमर भाई फॉर योर टाइम. And thank you very much for organizing this, Amil bhai, and especially thank you to everybody who joined us today here. Yeah. बहुत शुक्रिया सबका. अभी यहाँ पे इसको एंड करते हैं, ठीक है. Yeah, of course. एक क्वेश्चन है, just किसी ने पूछा है स्लाइड्स के बारे में. So what I can do is, मेरे पास सारे अटेंडीज की लिस्ट है, तो मैं इवेंटब्राइट के थ्रू मैं आपको ईमेल में ना स्लाइड्स का गूगल ड्राइव का लिंक भेज दूंगा, तो आप सबको स्लाइड्स भी मिल जाएंगी. That's great. तो यहाँ पे सर हम लोग जो है इसको एंड करते हैं. आप लोग जो है यानी हमारे साथ कीप इन टच, ठीक है. बहुत सारे लोग तो माशाल्लाह जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो ऑलरेडी टच में हैं, तो इंशाल्लाह वी मीट यू ऑल सून इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह, ठीक है. थैंक यू उमर भाई, अगेन थैंक्स लॉट फॉर योर टाइम. थैंक यू वेरी मच. ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.